A very good afternoon to one and all. Today we have Mrs. Soumya Saxena with us. Soumya is a senior copy editor working with Carvale. She has also been a senior TISA volunteer who has been always guiding TISA since a very long time. She is also a mental health ad, ad, mental health advocate who and she helps people a lot. Let us all invite Soumya with us. Very good afternoon, Soumya. Good, good afternoon, Rohil. That was a great welcome. I don't even know if I am. I mean, I deserve all of those praises. So, thank you so much. Great, It great. is great to be here and talking to everyone. Great. So why don't we start from your childhood? Tell us something about your childhood. What was it like, and what was your childhood with stammering? Yes, definitely. So, before I begin, is it like we have to speak in English only, or I can What speak in Hindi also, right? जैसी आपकी मर्जी ये गपशप भी आप ही के लिए है। आपको जैसे चलाना है आप चलाइए। Thank you so much. So, I I was born and brought up in Jaipur, Rajasthan, and actually I have spent a good 30, I mean not 30, but 28 years of my life in Jaipur, and I shifted to Mumbai in 2019, और तब से अभी तक मैं बॉम्बे में ही हूँ। बचपन से अगर स्टैमरिंग की बात करें तो मुझको नहीं लगता किसी बच्चे को पता होता है कि हकलाना क्या होता है, या किस तरह की बोली को अच्छा मतलब परफेक्ट बोला जाता है, या किस तरीके से बात करनी चाहिए। मेरे साथ भी वैसा ही था। मुझे याद है, मैं बचपन में काफी, बचपन से मतलब जब मैं केजी प्रेप में थी, तो मेरे पास अभी भी काफी सर्टिफिकेट्स हैं कि मैं पोएम रेसिटेशन और काफी स्पीच वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी। जो पहला किस्सा जो मुझे याद है, जब मुझे लगा कि देयर इज सम स्पीच इशू विद मी, वाज आई थिंक थर्ड या फोर्थ क्लास में, जब मतलब उस टाइम पे क्लास में वाइवा एग्जाम होते थे। सो मुझको ये बोल मतलब पोयम बोलनी थी, तो मतलब पोयम रेसिटेशन था। वन ऑफ माय टीचर सेड, मतलब शी एक्टेड वियर्डली इन द क्लास। मुझको समझ नहीं आया क्या प्रॉब्लम है। देन पेरेंट टीचर मीटिंग में उन्होंने मेरे सामने मेरी मम्मी को बोला कि इसको थोड़ा और आप स्पीच की प्रैक्टिस कराइए, इसको स्टैमरिंग है। तो तब मुझे वो पता चला। एंड ऑनेस्टली इतने साल टीसा से जुड़े होने के बाद, टोस्ट मास्टर्स जाने के बाद, सब जगह मतलब लाइफ के 33 साल जी लेने के बाद, आज भी मुझको ये महसूस होता है कि क्या उस टाइम उस टीचर ने मुझे नहीं बोला होता तो क्या मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे स्टैमरिंग है, और क्या मैं इतना कॉन्शियस हो, होती अपनी स्टैमरिंग को लेके। ये कहानी मैंने कई बार टीसा में भी शेयर करी है। एंड लाइक वी से कि वी कैन ऑलवेज थिंक अबाउट
the past and consider what if, what not. But yeah, that was when I first encountered what stammering is. And इफ यू सी, वो एक टाइम था, उसके बाद से मैंने ना तो स्कूल में कभी किसी स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा, ना मतलब देयर वाज अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके बाद से। तो मैंने मतलब मैंने नाम देना ही बंद कर दिया खुद से ही। सो नाउ मेरे घर में, ये फैमिली में स्टैमरिंग है। माय फादर स्टैमर्स, माय ग्रैंडफादर स्टैमर्स. Now I was lucky that they both knew that I have this issue. So my grandfather, he took me to a speech therapist when I was, I think, 6. I don't remember the age, but हाँ शायद 6-7 में. So मैं यहाँ पे जयपुर में ही एक speech therapist के पास जाती थी. And I don't remember the fees she used to charge, but I know it was quite a lot from today's सेंस ऑल्सो, जितना मुझे पता था, क्योंकि मुझे उनका घर पता है। सो मैं थोड़ा अंदाजा लगा सकती थी। सो वो है, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड। एंड उस टाइम आई थिंक मैं कुछ 3-4 महीने उनके पास गई होंगी, एंड शी वॉज वेरी नाइस। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, वो सारी वही प्रैक्टिसेस करवाती थी जो हम टीसा में करते हैं। वॉलेंटरी स्टैमरिंग, स्ट्रेंजर टॉक। एक उनकी एक्सरसाइज जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो है कि वो न्यूज़पेपर में, मतलब ये बात मैं बात कर रही हूँ अर्ली 2000s की। सो तो न्यूज़पेपर में एडवर्टोरियल्स आते थे, यहाँ जॉब वेकेंसी है या ऐसा करके। तो वो मुझे उसमें जो नंबर्स रहते थे उस पे कॉल करवाती थी कि आप पूछो उनसे कि मुझे जॉब अप्लाई करना है तो मैं कहाँ आऊँ। तो सिर्फ वो एक लाइन बोलने में मुझे बहुत डर लगता था। तो वो करवाती थी, जो हम अभी मेट्रो में या सेंट्रल पार्क में जैसे हम स्ट्रेंजर टॉक करते हैं, उसका वो उनका वर्जन था वो। तो मोर और लेस वही करवाती थी। बट शायद मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, या जो भी है वो आगे बढ़ नहीं पाया। एंड आई थिंक जैसे जैसे वी ग्रो ओल्ड, वी बिकम मोर conscious about our image. So I became very conscious about the way I speak. And I also had this, I mean, I think it's now after 30 years, I know कि वो हर उस एज में हर इंसान के साथ वो होता है कि हम कैसे दिखते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बोलते हैं। तो मुझको वो लगता था कि मैं तो बोल भी नहीं पाती हूँ। तो जैसे क्लास में जब कोई चैप्टर पढ़ने की बात आती थी, तो मैं काउंट कर लेती थी कि अच्छा मेरा नंबर अब आएगा। तो उस टाइम पे मुझे या तो पानी पीने जाना होता था, या मुझे वॉशरूम जाना रहता था। मेरा बहाना तैयार रहता था। कितनी ही बार हुआ है कि मैं सक्सेसफुली निकल गई, कितनी बार हुआ है कि मैं फंस गई, मुझे पढ़ना पड़ा और फिर पसीने पसीने आ रहे हैं। एंड after joining TISA, I was able to put names to जो मुझे बोलने में प्रॉब्लम होती थी। जैसे मेरे साथ है कि मैं मेजरली ब्लॉक में चली जाती हूँ। सो मतलब आई नो देयर वर टाइम्स वेयर माय फ्रेंड वुड, आई मीन आई कुड हियर देम लाफ पीछे से कि यार ये खुद का नाम ही नहीं बोल पा रही है क्या। मतलब व्हेन टीचर वुड आस्क मी व्हाट्स योर नेम, आई वाज लाइक सौम्या। अब आई नो मुझे स्लो ऑनसेट के साथ, वॉलंटरी स्टैमरिंग के साथ बोलना है, बट तब मैं नहीं बोल पाती थी। सो स्कूलिंग पूरी ऐसी रही, कॉलेज भी मोर और लेस ऐसा ही रहा। इनफैक्ट मैंने बीटेक करी है, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ईसी, विच इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सो प्रेजेंटेशन देने रहते हैं, सब जगह होता है। सो ये चीज कॉलेज में भी कंटिन्यू हुई, एंड वहां भी मैं वही करती थी, ये बहाने बना के भाग रहे हैं। देन फाइनली ऑफिस में जब आई, तो आई रियलाइज, आई मीन देयर वर सम इंसिडेंट्स लाइक, I mean, I remember one time where I had to present to a CEO, to my CEO, and I could not speak anything, and it was so embarrassing for me. तो तब मैंने आके मतलब उस दिन मैंने सोचा था कि मुझे इसके बारे में कुछ करना है, बट फिर भी मैंने कुछ नहीं किया बिकॉज कॉन्फिडेंस इतना कम था।
देन उसी साल में जब मतलब कंपनीज में अप्रेजल साइकिल चलता है, तो जब मेरा अप्रेजल का टाइम आया, व्हेन आई हैड टू प्रेजेंट, आई कुड नॉट, एंड बिकॉज ऑफ लो कॉन्फिडेंस आई आस्क्ड माय कलीग टू प्रेजेंट फॉर मी, एंड ऑफ कोर्स काम मैंने करा था बट वो प्रेजेंट कर रहे थे, तो जो दिखाता है उसको ही ज्यादा वेटेज मिलता है. सो दैट इज व्हेन आई रियल आई मीन इट, वो होता है कि कभी लाइफ में कुछ एक ऐसा होता है जब आपको लगता है नहीं अब बस बहुत हो गया. सो दैट्स व्हेन आई वाज लाइक नो, आई हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस, एंड आई गूगल्ड एंड आई केम अक्रॉस a stammering institute in Amer, Jaipur, which I think almost everyone in TISA has heard of it. Then there was TISA. So Google में सबसे ऊपर आमेर वाला था, सेकंड नंबर पे टीसा था. सो आई थॉट अच्छा आमेर वाला तो यही है. मैंने पहले उस पे जाके देखा, मैंने देखा फीस ले रहे हैं वो कुछ, लाइक ओके ठीक है टीसा भी देखते हैं. इट्स लाइक ओके इट्स फ्री. आई एंड ये सब मैं कर रही हूँ रात को शायद 10:30-12 बजे के आसपास. लाइक ठीक है, देयर वाज अ मेल आईडी. आई थॉट okay, there's no harm in writing a mail. So I wrote a mail. I had no hopes. And I got a reply from Sachin sir on, and मतलब it was more than a mail, it was a rant कि मैं इतना परेशान हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, आप मेरी हेल्प कर सकते हो क्या, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ लिखा था. बेसिकली रो ही रही थी मैं उस मेल में और कुछ नहीं. सो एंड आई वाज सो अमेज्ड, एंड आई थिंक इट इज the biggest turning point of my life till now, एंड आई डोंट थिंक मैं वो कभी वो मोमेंट भूल सकती हूँ जब मैंने वो मेल पढ़ा. उन्होंने मेरे एक एक सेंटेंस को एड्रेस, इट वाज अ लॉन्ग रिप्लाई टू अ मेल, और मैं तो वो ही विश्वास नहीं कर पा रही थी कि पहली बात तो कोई मेल भी पढ़ता है क्या इतना इतना बड़ा. दूसरी बात, आपने एक एक पॉइंट का इतनी डिटेल में जवाब दिया है, और जवाब भी वैसा दिया है जो मुझे सेटिस्फाई कर रहा है. मतलब I could feel that yes, he understands my issue and he is willing to work with me towards it. So that's how I came into TISA, and then I met uh, Ravi sir, who was TISA Jaipur SHG group coordinator and head at that time. So he also helped me a lot, and that is how I started accepting my stammering. And yes, now too, I do, at least I don't run away from situations now. I stammer, but yes, I don't run away. So I think that's a huge difference. सो टीसा ने लाइक काफी बदलाव लाए आपके लाइफ में, एंड वी विल बी टॉकिंग about this separately in our further discussion. So like मैं एक सब like I am very curious on one thing कि अगर आपको ऐसा एक चॉइस दिया जाए कि आप जो चाहो आप वो सुपर पावर मांग सकते हो, so then what superpower will you like to have? Wow, that is interesting question. मुझे पहले सोचना पड़ेगा क्या क्या सुपर पावर होती है, बट I think I would like to have the ability to fly. और Oh. बहुत ही सिंपल सा रीजन है, मुझे बचपन से सपना आता है और मैं सपनों में उड़ती रहती हूँ. इट इज as stupid as this. So I want to have this. मुझे वो सपना सच में बदलना है, बस ये ही है वजह, इसकी और कोई वजह नहीं है. Okay, and do you like to travel a lot? Yes, yes, of course. I do like to That travel a lot. So, that so explains a lot. yes, yes, yes. हाँ, और वो तो है ही कि फिर मैं उड़ के कहीं भी कहीं से भी कहीं जा सकती हूँ, definitely. Okay, okay. So when you joined so when you joined your B.Tech, so तब आपने टीसा ज्वाइन किया था, और it was before you joined टीसा? No, so मैंने बीटेक
2012 में कंप्लीट करा है, तब तक मुझे नहीं पता था टीसा ओके के बारे में। ओके इन फैक्ट मैंने मेरा जॉब आई ज्वाइंड इन 2012, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन आई ज्वाइंड, एंड आई ज्वाइंड टीसा इन 2015, actually 20, हाँ, so it was like good 2 to 3 years after joining job, so yes. okay okay. So then, what kind of what was your experience at college? Because that's the time when when we are conscious about a lot of things, like say like job, and then we need to build a career for ourselves, and then also like काफी कुछ चल रहा होता है जिंदगी में. So then what was your life during the college days? So I इट इज एक्चुअली स्ट्रेंज कि ये सवाल कभी किसी ने पूछे नहीं है, बट अभी जब आप पूछ रहे हो तो मुझे खुद को हंसी आ रही है कि कैसे मैंने मेरी पूरी कॉलेज लाइफ को, मतलब इंजीनियरिंग 4 साल की होती है, तो पूरे 4 साल को मैंने मेरी स्टैमरिंग के अराउंड मतलब स्ट्रक्चर कर लिया था. सो आई हैड structured my career also accordingly. So it was like basically I was not the best but not the worst with studies, मतलब हो रहा था, चल रहा था. So but I never participated in any co-curricular activities which involved me speaking on stage, yeah, in any ways. देयर वर टाइम्स, मतलब क्योंकि इंजीनियरिंग में हर सेमेस्टर, मतलब सेमेस्टर वाइज चलता है, तो हर सेमेस्टर में कई नए सब्जेक्ट्स आते हैं, तो मोर ऑफन देन नॉट देयर आर न्यू टीचर्स विच कम इन, एंड कई बार जूनियर टीचर्स भी आते रहते हैं. सो जब भी नया टीचर आएगा वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन मांगेगा, तो पहली क्लास उसी में निकलती है, और वो मेरी क्लास सबसे सबसे गंदी बड़ा डर. निकलती थी. सबसे बड़ा डर था वो मेरा. मतलब आप मुझसे क्वेश्चन सॉल्व करवा लो पेपर में, मुझसे मेरा नाम मत पूछो, मुझसे ये मत पूछो कि एंड इट वाज वेरी सिंपल. द टीचर्स जस्ट वांटेड टू नो योर नेम, some wanted to know your last year या 12th का marks, और some just wanted to know one to ho, ho, hobbies, that's it. बट वो नहीं बोला जाता था. मुझसे आप पूरा कैलकुलस करवा सकते हो सॉल्व, वो उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है. सो वो सब चलता था, तो मैं वही करती थी कॉलेज में भी. बट एंड देयर वाज ऑलवेज दिस इंटरनल फाइट टू हाइड माय स्टैमरिंग. सो बेसिकली पूरा जो स्ट्रक्चर था वो इससे था कि किसी को पता नहीं चले कि मैं स्टैमर करती हूँ, दैट्स इट. तो वही था. एंड यू आइडेंटिफाई पीपल, आपको पता चलता है कौन स्टैमर करता है इफ यू स्टैमर योरसेल्फ. सो देयर वाज वन पर्सन इन माय बैच, नॉट इन माय क्लास, whom I knew कि हाँ ये भी स्टैमर करता है, so I somehow felt connected to that person. So वो चीजें भी थी. But other than that, like I I mean क्योंकि मेरा कॉलेज उसी शहर में था जहाँ मेरी स्कूलिंग थी, सो देर वर अ कपल ऑफ पीपल जिनको मैं मेरे स्कूल टाइम से भी जानती थी. सो काइंड ऑफ दैट हेल्प्ड फ्रेंड इन मेकिंग फ्रेंड्स अ बिट. बट ये तो मुझे अभी मुझे वियर्ड लग रहा है, बट हाँ उस टाइम ये बात समझ में नहीं आई कि भाई अपने दोस्त बन गए हैं, उनको भी पता तो चलता ही होगा मैं स्टैमर करती हूँ, बोलने में सबको पता चलता है, बट वो मुझे जज नहीं कर रहे हैं. तो फिर जब 60 लोगों की क्लास में मुझे खड़े होके बोलना है, तो मैं बेसिकली मैं खुद ही खुद को जज कर रही हूँ, बट वो डर रहता था हमेशा. वाइवा में बहुत डर लगता था, मैं आंसर्स रट के जाती थी. रट के मतलब मैं जेन्युइनली प्रैक्टिस करके जाती थी कि मुझे क्या बोलना है. आंसर सही है गलत है वो तो दूर की बात है, मुझे तो बोलने का ही डर था. एंड इंजीनियरिंग में इट्स नॉट लाइक, मतलब आप रट कितना रट लोगे, वो लोग तो कॉन्सेप्ट्स पूछते हैं, राइट. सो देयर हैव बीन मेनी वाइवास वेयर like if it was in a batch of 2 people 3 people, and if I was, and I think it was always like this, I was in the on number 2 or 3,
So I would always say yes, I agree with whatever the person before me has said. अगर मुझे कुछ और ऐड भी करना रहता था तो भी आई विल नॉट से इट, क्योंकि आई यूज्ड टू गो इनटू अ ब्लॉग, आई वुड नॉट से. एंड बाय द टाइम आई केम इन फोर्थ ईयर आई रियलाइज्ड, मतलब ये मैंने खुद ने ही अपने आप को ऑब्जर्व करके देखा कि मैं अगर पीछे बैठी, सो आई यूजुअली यूज्ड टू सिट इन द लास्ट रो. आई थिंक सब लोगों का मन वही होता है. सो बट मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं अगर फर्स्ट रो में बैठी हूँ तो मुझे स्टैमरिंग नहीं होती है. और ये मुझे टीस मतलब ये चीज अब मुझे उसके 4 साल बाद टीसा ज्वाइन करने में समझ में आई, क्योंकि मुझे लोगों के जजमेंट का फियर था कि एंड व्हेन आई एम सिटिंग इन द फर्स्ट रो I don't see people, I just see teacher. It's like I'm talking one to one, and this is what I've observed in me, and it is still there with me. I usually stammer less when I'm talking to a person one to one, because I'm comfortable with them, and I am not worried about the sense of judgment. बट मैं अगर ग्रुप डिस्कशन में हूँ, अगर मैं स्टेज पे हूँ, तो फिर होगा, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि लोगों क्या वो करेंगे. जबकि मैं वन टू वन में भी आई विल स्टैमर, बट आई विल नॉट थिंक अबाउट इट दैट मच. That's the whole point. Stammering will be the same whether I'm talking to one person or 20 person or 300. But when it comes to the sense of judgment, it just becomes more with the, I mean, it is directly proportional to the number of people, I think. So वैसी सही बात है. So ये है. बाकी तो कॉलेज में मैंने सो हाउ आई डिसाइडेड वाज कि लोग बाग जो प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रहे थे, मैं नहीं बैठी प्लेसमेंट्स के लिए, बिकॉज मुझे लगा कि ये तो नहीं होगा अपने से. कंपनीज जीडी लेती हैं, कैसे करेंगे हम तो वो करते हैं, गेट देते हैं एंड और फिर आगे पढ़ाई करते हैं. सो दैट्स हाउ आई चोज माय करियर. although I never cleared gate exam to be honest. मैंने उसके बाद दूसरी मतलब एक्सटर्नली मैंने इंटरव्यू देख के जॉब भी ज्वाइन करी है. बट यस, सो दैट इज, आई मीन, मैंने आप भी देखिए, मैंने 1.5 साल इस भुलावे में ही बिताया कि ये तो नहीं होगा हमसे. मैं ऑल्दो इंटरव्यूज के लिए गई, बट आई नेवर स्टडीड इनफ टू इवन क्लियर द फर्स्ट स्टेज. सो आई वेंट देयर टू हैव फन विद फ्रेंड्स, बट I know I could have cleared it, but I never studied it enough because I was afraid the next stage is group discussion, which will be more embarrassing for me. So it's better कि आप written ही clear मत करो. And now I know कितना stupid है कि यार कम की तेरा तो first stage भी नहीं निकला, वो ज्यादा embarrassing होना चाहिए. But उस टाइम मुझे वो लगता था कि नहीं, वो ज्यादा है. And I just became like in cultural activities also. I became active in dancing. Maybe I was the photography head of my batch. तो हर वो चीज जिसमें बोलना नहीं. So everything, that is how I did. And now I feel, yes, there are regrets. I feel bad about it because of this I could not make great connections with my seniors, क्योंकि मैंने कभी बातें नहीं की. इवन इफ दे वुड कम टू मी, आई वुड बी लाइक, जितना पूछा उतना ही जवाब देना है. सो बस वही, तो आगे से कभी अप्रोच नहीं किया. एंड नाउ आई रियलाइज दैट इट वाज अ वेरी व्हाट आई से कि मतलब बस वो उस टाइम पे जितना दिमाग चलता था वैसा किया. एंड हाँ एंड जैसे आपने बताया, मेरे भी कॉलेज की जर्नी वैसी ही थी. लाइक मैं भी अभी ऐसा सोचता हूँ कि मैं कितना पगला था मैं, कि मैं जीडी में क्यों नहीं बैठा. क्या फर्क पड़ता था. यस, आई एंड अग्री. या एंड मैं ये मतलब ये भी सोचता हूँ कि अभी जो जो अभी कॉलेज में टीसा के मेंबर्स है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी सीख है कि लाइक तुम्हारे स्टैमरिंग से डरो मत, जाओ जो भी होगा देख लेंगे, राइट. Right, correct, correct. In fact, now I feel कि instead of running away from situation, I could have accepted it कि हाँ मैं स्टैमर करती हूँ. And honestly तब तो सोशल मीडिया इतना वो नहीं था. अब तो मुझको लगता है कि मैं मेरी स्टैमरिंग को ही अपना यूएसपी बना के कंटेंट क्रिएट कर सकती हूँ कि हाँ एग्जैक्ट. ये मेरा यूएसपी है, ये मतलब दिस इज मी.
मतलब लोग हर, अगर हम क्लास में 60 बच्चे हैं तो एवरी पर्सन इज यूनिक, एंड द स्ट्रेंज थिंग इज कि हर इंसान को अपनी यूनिकनेस ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, जबकि मेरे को तो मतलब मेरे सर पे लिखी हुई मिली है स्टैमर, वो तो मुझे तो मेहनत भी नहीं करनी है, एंड आई कैन एक्चुअली राइड ऑन इट, एंड आई फील आई कुड हैव डन सो मच, बट ठीक है अब कर रहे हैं एक्चुअली अभी आपने जैसा बताया, मैं मतलब मैंने सच्ची में ये तरीके से कभी सोचा ही नहीं। एंड आई गेस ऐसे काफी लोग हैं। जैसे अभी रजत जी ने भी एक थम्स अप किया, तो फिर शायद रजत जी के लिए भी ये एक नया पॉइंट ऑफ व्यू है। ग्रेट। थैंक यू रजत। या सो देन सो देन अभी जो भी टीसा के मेंबर्स whomsoever दे आर स्टडिंग इन कॉलेज, प्लीज हमारे जैसे गलती बिल्कुल ना ही करें। इंटरव्यू के लिए जाओ, जीडी के लिए जाओ, एंड आपको जो भी कॉलेज में लड़का या फिर लड़की पसंद है, गो एंड आस्क देम फॉर अ डेट। डोंट बी फ्राइटेंड। Yes, I totally agree. In and see whether it is about going on a date, ये बोलने के लहजे पे जज कर रहा है, तो यू डोंट डिजर्व दैट पर्सन। सो अच्छा है आपको, मतलब लोगों को ना ऐसा 6 महीने बाद पता चलता है कि अरे यार मेरे, फिर आपको लगता है कि मैंने 6 महीने उस लड़की के साथ वेस्ट कर दिए, वो मैं सच्चाई नहीं समझ पाया। अच्छा है ना, आपको तो पहले ही बार में ही पता चल जाएगा कि यार ठीक है, अगर वो जैसा मैं हूं या जैसी मैं हूं वो अगर मुझे वैसे नहीं अपना पा रहे हैं, तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वो है, एंड इंटरव्यूज में फर्स्ट ऑफ ऑल आई मतलब लाइक टीसा आल्सो कंडक्ट्स मॉक इंटरव्यूज, एंड इनफैक्ट कॉलेजेस में खुद में उनके आपके सीनियर्स यूजुअली मॉक इंटरव्यूज करवाते हैं। एंड आजकल तो बहुत सारे मतलब मॉक इंटरव्यूज के लिए भी ग्रुप्स हैं, सो वी कैन ऑलवेज गो देयर। एंड आफ्टर हैविंग स्पेंट सो मच टाइम इन कॉर्पोरेट, I know this thing for sure, that the people who are hiring you, they do not care about lisp or stammering। मतलब unless आपको, आपका काम ही ये है कि आपको स्टेज पे ही बोलना है पूरा टाइम, तो यस। बट इफ यू आर गोइंग फॉर एनी जॉब which does not involve work like वेर यू हैव टू, मतलब अगर 8 में से आपको 7 घंटे बोलना ही है स्टेज पे, या अगर आपको किसी कॉल सेंटर में करना है अप्लाई, देन यस इट रिक्वायर्स दैट यू हैव a level of speech fluency, but other than that basically 96% of the jobs में लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपको स्टैमरिंग है, लिस्प है या कोई और स्पीच इम्पेडिमेंट है। दे जस्ट केयर कि जिस जॉब के लिए आप आ रहे हैं उसके लिए उस रोल में आपके पास वो स्किल्स हैं, आप मतलब आपके पास वो स्किल सेट है क्या, एंड आर यू एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। व्हेन आई से कम्युनिकेट प्रॉपरली आई डू नॉट मीन स्टैमरिंग, आई मीन जो आप सोच रहे हैं क्या वो आप बोल पा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दिस कि आप एक ही बात को घुमा रहे हैं, इट्स जस्ट दिस कि इफ आई वांट टू reach from point A to point B, then I am able to explain the path to the person. If yes, then nobody cares, and ये चीज समझने में मुझे बहुत साल लगे, so please I request everyone कि मतलब हम खुद ही खुद को अंडर प्ले करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इन लाइफ व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। लाइफ आई मीन वहाँ आई थिंक लाइफ में दुनिया में बहुत लोग ऑलरेडी बैठे हैं हमें रिजेक्ट करने को, तो हम खुद खुद को क्यों कर रहे हैं रिजेक्ट। सो let them do their job, and people really don't care about stammering, and at least I learned it the hard way so I am sharing it so that others don't.
वंडरफुल वंडरफुल. सो सो जैसे आपने बताया, देन यू स्टार्टेड वर्किंग, एंड while working did you face any difficulties or any kind of trouble just because of your stammering? Because maybe company thought that you might not be a good fit for this job after you got the job. So like, did you face any such situations either from the company or from your colleagues? Uh, Never from my colleagues, first of all. Let me tell that I have always been lucky, honestly, that I have had very nice and supportive colleagues. So that has not been an issue for me. But so the problem has always been me. मैं खुद ही खुद को जज कर रही थी. So ये है कि हम तो हक लाते हैं, हम तो कैसे आगे बढ़ेंगे. And yes, I faced a lot of issues in job. मेरा सिलेक्शन हो गया था. आई जॉइन देयर, एंड द बैच, मतलब बीटेक का एक मतलब बैच में ज्वाइनिंग करते हैं 30 लोगों के या 28 लोगों के. सो उस बैच में दे गेव अस, मतलब हमारा 3 महीने का प्रोबेशन, 6 महीने का प्रोबेशन था. सॉरी, मुझे याद नहीं, मैं 2012 की बात कर रही हूँ. बट so the probation period may we were given a project which we had to present before the period ends. So we had to present it to the entire management. So there was CEO, department heads, like all the very top management of the company. So basically ये वही presentation है जिसके बारे में मैंने अभी शुरू में बताया कि I was presenting, and boardroom very intimidating, and वैसे ही डर लग रहा होता है सबको. And I by that time I had not joined TISA, so I was not aware of the concept of acceptance. So I went there, I went into a severe block, I could not speak my name. And now I had worked really hard towards that project, but when I am presenting, I have prepared the presentation also very nicely, but when I'm presenting, I'm not able to say anything. So the CEO, I mean, I was standing in front of people, the CEO left the room. And then the other 4 or 5 members who were there, and one amongst them, one sir, he was, I think he kind of understood, and he was the one who had. So basically, जब आपको प्रोबेशन में रहते हो, जब प्रोजेक्ट मिलता है तो एक मेंटोर भी मिलता है. सो ही वाज माय मेंटोर फॉर दैट. सो ही, आई थिंक हमने कभी डिस्कस नहीं करा क्योंकि मैंने कभी बोला नहीं मुंह से. सो उन्होंने बट वो समझ गए. सो ही वाज द ओनली वन हु वाज आस्किंग क्वेश्चंस टू मे बी, मतलब मुझको कंफर्टेबल करने के लिए. एंड the presentation should have lasted about, I think, 15-20 minutes. 5 मिनट में मैंने खत्म किया क्योंकि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई थी. He was like, okay, it's okay, fine. He was treating me like a kid जो बहुत घबरा गई है. So वो हुआ भी था kind of. And when I came back, I was very embarrassed. I was very sad. It was one of the lowest days. I later, I think next 2-3 दिन बाद, that sir also came to me and he said कि what happened, तुम डर गए, ये है वो. So I told him कि सर थोड़ा स्टैमरिंग का शो, ये है वो है. तो then he gave me the very, जो हर जेनरिक एडवाइस जो हर कोई देता है, अरे स्टैमरिंग से क्या होता है, स्टैमरिंग कुछ नहीं है, बस थोड़ा घबरा जाते हो आप, ऐसा कहाँ है, देखो अभी तुम मुझसे बात कर रही हो, कहाँ स्टैमरिंग हो रही है तुम्हें. बेसिकली वो जो हम सबने सुना है घर में, तो उन्होंने वही सब बोला. एंड सिंस ही हैड सीन मी वर्क आल्सो, एंड ही नेवर found me to be inefficient in any way. So he felt कि I was just nervous, but I knew the problem is something else. So that was there. But then again, I was uh, uh, like I was brought down with, I mean, I was at a lower level than before. मतलब और ज्यादा मेरा confidence कम हो गया था. I started stammering even when speaking to person, and in every aspect. Then again, something like this presentation happened, and I was asked to present, but I refused.
Now, luckily, my boss, so when we were allotted the managers and the departments, my boss, he was very nice. I still think he is a mentor to me. So he was very nice, and he told me this. He saw, man, you have some speech issue. Why don't you go and take a treatment for it? मतलब उनको पता नहीं था कि क्या तरीका है इसको रिजॉल्व करने का, बट उन्होंने कहा कि तुम्हें करना चाहिए कुछ, क्योंकि यू आर गुड, सो डू इट. So he would always put my name in the presentation because he knew that I will back out. So he made sure कि वो हमेशा डालते थे मेरा name. So now see, he was so great. What he did was, so this is एक साल निकल चुका है. So what he did was, we had a department of 5 people. He said, सौम्या, हर फ्राइडे को तुम इस वीक में हमने क्या काम करा है, तुम हम 5 लोगों को, it was a small room, उसमें तुम हम 5 को प्रेजेंट करोगी. So I used to sit on his desktop and I used to present. There was So supportive. stammering, but he was very supportive. He said, no, you will do it. तुम हम 5 लोगों को present करो. Then he took me on a senior level of presentation. He said, नहीं, तुमको करना है. So now till now I had not known of TISA अभी भी. So I presented that time, but then again I went into a block. So there I was in a bigger burden कि एक तो मुझे सर सपोर्ट कर रहे हैं एंड फिर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ. सो दैट इज व्हेन आई सर्च्ड अबाउट इट एंड आई वाज लाइक ओके. फिर मुझे टीसा से हेल्प मिली, मुझे सचिन सर ने गाइड करा, मुझे रवि सर ने गाइड करा, मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में गई. आई केम टू नो कि रवि सर अकेले जाके टीसा की मतलब एसएचजी मीटिंग्स करते थे. And he would go to Jaipur Central Park and he would talk to strangers on his own. So I was very motivated. Seriously, was extremely motivated. And I went there. He gave me the chance to conduct the meetings. I conducted a couple of meetings. I talked to strangers. And so parallelly, मेरा यहाँ टीसा में भी there's that path which is going, जहाँ पे हेल्प मिल रही है. एंड उधर जो मेरे सर है, जो मेरे बॉस हैं, वो भी मुझे हेल्प कर रहे हैं. सो आई रिमेम्बर इट टुक मी आई थिंक अराउंड 1 to 2 years, बट आई डिड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ सीईओ आफ्टर सम टाइम इन on behalf of the department, and it was great. It was superb. He listened to me talk, and in fact my boss also shared his secrets with me. Like he said he has this fear of public speaking, so he does not want that someone who is under him should have the same issue. So he said that he cannot Wow. stand and present. So I remember whenever we had board meetings, like once in 3 months or something like this, he was the only one who used to sit and present. The rest everyone would stand, but he would sit and present. So he shared that with me कि देखो सौम्या, मैं खुद ऐसा करता हूँ, तो ये डर होना कॉमन है, तुम इतना वो मत करो. So I've been very blessed and लकी कि मुझे लोगों ने बहुत सपोर्ट करा है. सो यस, ऑफिस में प्रॉब्लम आई, बट वो सारी प्रॉब्लम्स मैंने खुद नहीं खड़ी करी थी मेरे दिमाग में, वरना लोग बहुत सपोर्टिव थे. एंड माय कलीग्स, उनको जब पता चला कि ऐसा स्टैमरिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर लाइक कि आई, उनका वही रिएक्शन था, कौन सी स्टैमरिंग, हमने तो कभी नहीं देखा तुझे हम हमारे से स्टैमरिंग करते हुए, कौन सी स्टैमरिंग हो रही है. तो दे वर, मतलब इवन इफ they had noticed, and I'm sure they would have noticed, but they never expressed it in front of me. They were very supportive that way. And when I was presenting, like I had this colleague, and he was very supportive. He was a year senior to me, and he would tell me what to present, how to present. He too would guide me with my sir. So yes, I've been lucky that way. Wow, that was really a very intense journey with all the support you got. But yeah, मतलब but आप मानते हो कि नहीं कि like maximum fear was in your head कि लोग क्या Oh, yes, yes. 100%, maximum नहीं, 100% मेरा ही था. Like I'm saying, it was totally me. And I, at least now I feel कि yes, stammering is a part of me. I cannot get rid of it. Honestly, I don't even want to get rid of it now because
it has made me what I am, and I'm very happy with it, very happy. And I Great. feel blessed for what I am right now. So that is the thing. But more than stammering, the fear of stammering is what creates problems everywhere, चाहे वो स्कूल है, Agree. चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो ऑफिस में, कि जो हमें हमारी इमेज के बारे में हम इतना सोच के चलते हैं, वो ज्यादा खौफ पैदा करता है, और वो फिर इवेंचुअली स्टैमरिंग को बढ़ाते ही रहता है. Right, right. Totally agree with you. And before we shift, आपने आपका domain कैसे change किया, which is a very interesting part, and I am really dying to know more about uh, about it. So before we dive deep into that, I just want to know कि after joining TISA, and after you learned how to accept it, and after applying techniques, what all changes you felt? So I read the book Apna Haath Jagannath. I read almost all the blogs that were there on TISA that time, like in 2015, 16, 17. I was very active till 2018. After that, I have tried to come in again and join the meetings, and सच में मैंने ध्रुव को एंड सबको ऐसा बहुत बार बोला है, बट मुझे खुद को बुरा लगता है कि मैं आना चाहती हूँ, बट like we say, life happens, and I feel bad to accept, but yes, I am very bad at prioritizing things. So in fact, ये इसके लिए भी, इस मीटिंग, इस पॉडकास्ट के लिए भी, आई नो यू आस्क्ड मी कितना पहले, बट आई एम सो सॉरी. मैं No worries. आई डोंट, आई एम रियली सॉरी रोहिल, मेरे को मैं बिल्कुल नहीं दे पाती. सो दैट इज द थिंग. So anyway, coming back to the question, the thing is, जो मैंने एक चीज जो लाइफ में हर एस्पेक्ट में मुझे हेल्प करी है, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ acceptance. So basically accepting my stammering, the way I am, the way I look, the way I walk, हर चीज, जो मैं जिस फैमिली से हूँ, जिस बैकग्राउंड से हूँ, जो मेरी प्रॉब्लम है, वो सब मेरी है. मतलब इट इज व्हाट कंप्राइजेस मी. So this is what has helped me in everything. So stammering introduced me to TISA, and TISA introduced me to the concept of acceptance. I don't know if I had been introduced to this concept if I had not been a part of TISA. Maybe कोई और किसी और फॉर्म में मैं समझती, but it came into my life when I needed it the most. I think I was at a very low phase in life that time, and मतलब लाइफ में ऊपर नीचे चलता रहता है, बट उस टाइम पे मतलब इट रियली, वो कहते हैं ना, ऐसे ऐसे हाथ में लेके उठा लिया इस कॉन्सेप्ट ने मुझे कि हाँ, इट्स ओके, थिंग्स डू हैपन इन लाइफ. सो वो चीज है. एंड अबाउट द वेरियस टेक्निक्स, आई थिंक फॉर मी व्हाट वर्क्स ग्रेट फॉर ब्लॉकिंग इज वॉलंटरी स्टैमरिंग. when I see, if like I know which words, अब मुझे पता है किस वर्ड पे मैं अटकने ही वाली हूँ, मैं अटकूंगी ही सही. I have a copy editor and I cannot speak the word editor. So imagine this. I cannot speak editor. I cannot speak I am an engineer. I cannot speak E. मुझसे नहीं बोला जाता है, तो अब मुझे वो लाना ही पड़ा है. So these small techniques, it takes a lot of practice. Yes, it takes. I still stammer, but मतलब ऑनेस्टली मैं कॉन्शियसली कोई टेक्निक प्रैक्टिस नहीं करती हूँ. मुझे ध्रुव और सचिन सर ये बोलने के लिए बहुत मारने वाले हैं, बट मैं चला के कोई टेक्निक प्रैक्टिस नहीं करती हूँ. इट has just become a part of my speech now. I do voluntary stammering. I do bouncing twice or thrice before, when I am saying E or something, like K maybe कई बार. तो जो जिन वर्ड्स में मुझको लगता है, बट मैं ऐसे कॉन्शियसली नहीं करती हूँ कि जैसे अब मुझे के वर्ड से कुछ बोलना है तो मैं सोचूंगी पहले से ही. नहीं, इट्स जस्ट दैट इट हैज happened, and I think it happened because I am okay now to stammer in front of people. I don't care
कि मैं मेरे करंट ऑफिस या अभी मुझे, जैसे अगर मुझे इंटरव्यू देना है कल, तो जो इंटरव्यू व्यूई है, अगर उसके सामने मुझे मेरा बैकग्राउंड बताना है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, सो वो जो लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस है कि हाँ ठीक है स्टैमर ही तो कर रहे हो, सो या, एंड आई थिंक यस, सॉरी, वन थिंग विच आई थिंक विच हैज हेल्प्ड मी अ लॉट इन दिस इज, ये टेक्निक मुझे ध्रुव ने भी बताई थी, एंड आई लर्न ऑफ दिस टेक्निक इन दिल्ली एसएचजी इन 2015 बेसिकली, कि आप कहीं भी जा रहे हो इंटरव्यू देने, या जहां भी आपको लग रहा है कि आप, मतलब आपको कॉन्फिडेंस कम है इस ये सोच के, इस डर से कि आप स्टैमर करोगे, सो एज अ डिस्क्लेमर से इट इन द बिगनिंग कि आई एम अ स्टैमरर, प्लीज बी पेशेंट विद मी, that's it. So I used to do it a lot in the beginning. Now I don't, maybe because I don't care, maybe. But I know if it comes to it, I am okay disclosing it in the beginning. So the current job at Carvale, I got it like this only. I got this job in 2020, लॉकडाउन था, फुल लॉकडाउन, जून में, किसी को कुछ नहीं पता है क्या होने वाला है दुनिया में, एंड I it was a telephonic call, and telephones are nightmare for me. अभी मतलब मैं एक बार मैं ग्रुप डिस्कशन में भी चली जाऊंगी, बट मुझसे फोन पे बात नहीं होती है, मैं मेरी मम्मी से भी बात नहीं कर पाती हूँ, सच में कुछ तो प्रॉब्लम है फोन में, मुझ वो मैं आज तक क्रैक नहीं कर पाई, कुछ तो प्रॉब्लम है फोन चीज में, जिसमें मेरी स्टैमरिंग मल्टीप्लाई बाय 10,000 हो जाती है, कुछ तो है. सो दिस इज द थिंग वेयर I gave the interview and I felt that I will stammer for sure. So the first line I told my current manager who interviewed me then was, see, I stammer, so you'll have to be a bit patient with me, and if that is an issue, so please let me know. And the first thing that she said was, no, that's not an issue at all. If you stammer, that is fine for me. सो बस इतना बोलना था, और मेरा मतलब वो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई. उसके बाद आई डोंट रिमेम्बर, बट अगर मैं स्टैमर भी करा होगा तो आई डोंट थिंक शी केयर्ड, एंड आई डोंट थिंक माय मैनेजर स्टिल थिंक्स इफ आई स्टैमर. मैंने कभी बात नहीं करी इस बारे में, बट नाउ इफ यू आर सिंग, आई विल आस्क हर टुमारो, डू यू do you know I stammer, because yes, they don't know maybe. So yes, so that is the thing, ki it has helped me a lot, all the techniques, uh, but the one technique that has helped me a lot, well, a technique as in a proper technique, would be bouncing and voluntary stammering, and then the very concept of acceptance, कि जो है वैसे ही है, अब इसका कुछ कर नहीं सकते. Yeah, and whatever you told, I completely like even I have seen the benefits of it. जैसे कि मैं भी एक जॉब इंटरव्यू के लिए गया था, and just before the interview I told them कि मैं stammer करता हूँ, and the business director was so what चलता है चल चलो अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में. So Correct, correct. it completely works, you know, it works. And yeah, and the technique also works, like जैसे आपने बोला कि you are comfortable with voluntary and bouncing, so similarly I am way too comfortable with pausing. I don't know why, but people say that it makes me look more matured, and then I like that compliment. So that's why Yes, now I use that's it true. even more. Yeah, that is true. That is true. I know. And I think there's this सिग्ना कि सबके लिए अलग अलग चीज काम करती है. Exactly. So you just have to practice and see what works for you. क्योंकि, और ये मेरे को तो लगता है अपने आप में कितनी खूबसूरत बात है कि कि किसी भी दो इंसान की हकलाहट भी एक जैसी नहीं है. Exactly. We, even the stammerers are unique on their own. So if you are unique, so then of course pick whatever you can. Great. Yeah. Yeah. And we all are imperfectly just perfect. Correct,
correct, correct. And in fact, I have used this phrase quite a lot of times कि मुझे ना मतलब थोड़ा बफर टाइम है मेरे केस में, so please be patient with me. So just saying this in the beginning, that way you are making yourself comfortable. So yes. Great, great. So now coming to one of the most i- interesting part. So what made you think that you need to shift into a different domain? And मुझको ये भी पता है कि like shifting your domain is not at all a simple task. बहुत आती है, क्योंकि मैंने खुद 2 बार डोमेन चेंज Wow. करना ट्राई किया हूँ, बट आई हैव फेल्ड. No, no, no. So that's why, yeah, so then that's why I am very much interested ki like how and when did it all happen, and So when did you find your love for writing? Yeah, sorry. So no, sorry for starting in between. So okay, मैं रिवर्स ऑर्डर में आंसर करना स्टार्ट करती हूँ. लव फॉर राइटिंग वाज ऑलवेज देयर, एंड आई डोंट नो इफ इट इज द केस विद ऑल ऑफ यू, बट आई फील कि अब हम बोलने से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो हम लिखते तो है ही सही. मैंने तो एटलीस्ट मोस्टली जितने भी जो हकलाते हैं आई हैव सीन दे आर ईदर गुड, मतलब दे आर गुड राइटर्स इन सम फॉर्म और द अदर. कोई अच्छे स्टोरी लिखता होगा, पोएम, कुछ ना कुछ तो लिखते ही है. सो it just came as a form of expression, and I have been enjoying writing as long as I remember. So there is no time stamp to it, but yes, it is. So, but it was more of creative writing, and then I took engineering, which is a technical domain, and I was a CNC programmer. So वहाँ पे as such writing का कुछ था नहीं, other than writing mails, of course. And I used to work on technical manuals. So वहाँ पे थोड़ा बहुत writing का काम था, but it was not a writing as such. So when I got married in 2018, and I saw that my husband has a stable job, and it is like I can afford to take a risk. So I asked him and I requested him ki like, will you be able to hold the fort while I take this risk and switch the domain? And he was like, yeah, sure, why not? So he was supportive that way, that he said ki ha, you can experiment. So I left my job in 2019, but before that, so मेरा interest थोड़ा English में शुरू से था. And it is weird. Okay, सॉरी, बीच में मैं एक और किस्सा लेके आ रही हूँ क्योंकि मुझे अभी ये रेलेवेंट लग रहा है. सो मोस्टली हम सबके पेरेंट्स बोलते हैं ना कि साइंस लो, फिजिक्स लो, मैथ्स लो. मेरी मम्मी ने मुझे बहुत काउंसिल करा था 10th में कि तू गलत ले रही है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तुझे आर्ट्स लेना चाहिए, तू आर्ट्स में अच्छी है. और मैंने पीसीएम लिया ये सोच के कि आर्ट्स में तो भाई मतलब आपको पब्लिक सेक्टर या वैसे जाना पड़ेगा, तो बोलना पड़ेगा. तो और मतलब एक 10th के बच्चे की क्या सोच है, वो इतना ही समझ पाते हैं ना कि मतलब मैथ्स और साइंस है ना. तो एंड आई वाज नेचुरली गुड एट मैथ्स, तो आई थॉट कि ओके आई विल गो इनटू द टेक्निकल डोमेन. क्या होगा, मतलब ऐसे ऑफिस में बैठ के ऐसे कंप्यूटर वगैरह पे काम करते रहना पड़ेगा, तो ठीक है, उसमें बोलना नहीं है, तो हम ऐसा ऐसे खटखट के काम करते रहेंगे, कम बोलना रहेगा और हो जाएगी लाइफ सेट. So I forced my mom to make, I mean, she wanted me to go for arts, and I came into engineering willingly. Now, come to 2019, I am myself coming into arts. So I am doing MA. So yes, so basically मैंने I went into masters, I mean MA in English, and मैंने वो करा, एंड जॉब के साथ ही करा था मैंने. सो आई कंप्लीटेड इट इन 2019. उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी. आई ऑनेस्टली आई नेवर
thought I will come into writing. I mean, I will take writing as a career. I wanted to become a photographer, and that was the reason I left my job. So I left my job to become a full-time photographer. But the thing is कि 3-4 महीने का मैंने खुद को ब्रेक दिया था कि 8 साल से नौकरी कर रहे हैं 2012 से, and I had a couple of weddings in home too. So I thought, fine, I'll roam around a bit. And during that time, my husband and I had like planned कि we will move to Mumbai. So he gave a couple of exams, and he moved things in his company like that. That we moved to Mumbai in 2020. I mean, he came in 2019, and I came in February 2020 after attending a couple of weddings at home. And March में तो लॉकडाउन लग गया था. So I was like, I thought कि अब क्या करें, फोटोग्राफी के लिए तो बाहर जाना रहता है लोगों को, मेरा तो कोई जानकार भी नहीं इधर. I had thought I'll join some photographers and do internship and random stuff. And in between, while I was working with my previous company, I had gone to a couple of photography conferences and all. So I'd made some connections, and I was thinking कि maybe I'll connect with them when I move there. But what to do in lockdown, and the very first where none of us knew what to do. So 1-2 महीना देख के आई थॉट कि ठीक है, अब नेक्स्ट बैकअप क्या है. अब इंजीनियरिंग में वापस तो नहीं जाना है कोर फील्ड में. So I thought, okay, my next love is writing. So I was searching for various things. I did a couple of internships as a writer too. Basically, मैं वापस 8 साल के करियर के बाद when I resigned, I was a deputy manager, and I was doing internship again as a writer in 2020. So I was doing it, and but yes, I could take this call because I had requested my husband that, see, you will have to see the financials for some time. I want to do this, so please give me like 1-1.5 साल का time. Like, okay, good, we can do that. So that was where I got the support. And so जब मैं ये सब writing का देख रही थी, तब मुझे ये कार वाले की internship दिखी, where they had asked, and I just wrote them कि so my previous company, I was in a manufacturing sector, which was automotive manufacturing. So I just wrote one line कि I had been working in automotive sector for 8 years, and what else do you know. So and then, like I shared right now, मैंने interview phone पे दिया था, and the same thing happened, and I came into this. So honestly, when I came into copy editing, I had no idea what copy editing is. I was just hired क्योंकि मेरे को इंग्लिश आती थी, क्योंकि मैंने एमए करा था, और क्योंकि मेरा ऑटोमोटिव सेक्टर में एक्सपीरियंस था. आई न्यू अबाउट कार्स एंड बाइक्स. I had been manufacturing, I mean, I had been working in a company that manufactures parts of bikes. So I knew the technical part मेरा साउंड था, और जो आर्ट वाला फील आता है कॉपी एडिटिंग और इंग्लिश का, उसके लिए मैंने बस एमए इंग्लिश करा हुआ था. सो वो है, एंड I learned it on the job. So then when I was hired, I read, okay, what is copy editing, what you have to do. So I learned it on the job. I learned it from my manager, and I enjoyed it. So I've stayed it here. I mean, I have been continuing here till now. And it is basically about language. I have always loved languages. I want to learn a lot more languages. So, but मुझे टाइम नहीं मिल पाता है. But हाँ, so मतलब language मुझे बहुत fascinate करती है. I want to learn a lot of languages. So मुझे आती 2 ही है, and I'm really really jealous of people from Maharashtra or Karnataka or Kerala, or मतलब maybe not the North Indians, but majorly the west or southern part of India, because like in my current office there are people who know 4 or 5 languages, and I'm really jealous of them कि मतलब तुमको मतलब you one is your parental language or all of this. So that is how I got into this. And yeah, so I think, yeah, that's the only thing. That's how I transitioned into it. I know it sounds not so exciting as you might have expected, but
हाँ, तो बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड था, जो टेक्निकल बैकग्राउंड था, दैट हेल्प्ड, एंड माय डिग्री इन MA, it helped. So that is the thing. And so if somebody is wanting to make a career shift, maybe you need to see which domain you are going in. So there has to be one skill set, so at least a degree or a certification of some kind, so that the person who is hiring you, तो आपके पास वो एक, वो नहीं होता जो एक टैक, मतलब एक हार्ड स्किल होनी चाहिए, हम्म राइट? सो वो तो मेरे केस में वो MA इन इंग्लिश था, आई थिंक. एंड देन देयर वाज दिस बैकग्राउंड ऑफ automotive. So if you are a fresher, then the background would not be the case. But yes, you can always, I mean, अभी तो इतने courses हैं, so you can always go and take up some new course there. And yes, you, like, if, at least I feel this way, and I can be terribly wrong about it, but since I did it this way, is that I started from scratch. Like, I cannot expect कि मुझे कोई डेप्यूटी मैनेजर से डेप्यूटी मैनेजर लेवल पे ही ले लेगा, दूसरी दूसरी हम्म नॉट इवन इंडस्ट्री, मतलब एंटायरली न्यू डोमेन में, क्योंकि मैंने वहां पे ग्राउंड अप काम नहीं करा है. सो वो चीज है. सो यू विल हैव टू बी विलिंग to take instructions from people who are 5 years, 10 years younger than you. You need to keep your ego aside. You don't have to, be judgmental about it. And I think that's where stammering helps you, because it teaches you this very factor, this very aspect ki, you don't have to judge people. People will know more than you. Like, there are people in my office who are 10 years younger than me, but they know a lot more than me. So मतलब मुझे वो नहीं सोचना चाहिए कि यार वो बच्चा, कल का बच्चा मुझे कैसे कहेगा, which I think a lot of people, I mean, I know a lot of people do that. But मतलब age is just a number when it comes to, I think, in all the aspects, especially work field में, जहाँ पे एज डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज आपने कितने साल उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बिताए हैं. सो दैट ऑल्सो हेल्प. सो या, आई थिंक स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहिए. एंड इनफैक्ट आई वुड लाइक टू लर्न if somebody has switched and switched it at the same hierarchy level, तो मुझे भी बताओ प्लीज. Wow, and first of all, जैसे आपने बताया कि from a deputy manager position, you directly started a new career path from the scratch, and that really requires a lot of determining, like what we say, determination or guts, or like whatever we say, but then that's really great thing to learn from you. थैंक यू सो मच. ऑनेस्टली मैंने इतना सोचा ही नहीं था. नाउ यू आर सेइंग, सो आई कैन थिंक इट. इट्स जस्ट दैट I wanted to do it. I enjoy doing it, and I still enjoy doing it. That's it. So, and again, I'm coming to this because I really feel कि स्टैम्पिंग ने मुझे एक्सेप्टेंस सिखाया है, एंड वहीं से ही मुझे ये चीज आई कि मुझे, yes, of course, my previous job was paying me a lot more than I am getting right now. So I took a huge cut. Huge means like a huge cut. So the thing is, will that money make me happy? I had it, Mm. but it was not. But when I am working here, it is making me happy. I'm happy doing what I do. I have a good team. Money is like almost 70% less, but I'm happy doing what I'm doing. So that is, I think, that level of acceptance has all come from stammering. कि मतलब नहीं चाहिए मुझे लाइफ में वो सब कुछ, तो जब वो चीज चाहिए नहीं तो मैं उसके पीछे भागती क्यों. Great. सो Yeah, यस. got it. एंड एंड अगर आप 2 साल पहले लाइक मुझे कोई पूछता कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज कॉपी एडिटिंग और कॉपी राइटिंग, सो देन लाइक आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि लाइक समथिंग, कुछ तो भी कॉपी करना है. सो देन आई वाज फुलिश हाँ. अबाउट इट. आई नो दैट्स अ वेरी वेरी चाइल्डिश आंसर.
सो देन आज अगर आपको कोई पूछता है लाइक कोई अगर पांचवी या छठी क्लास का बच्चा आपसे पूछता है कि व्हाट इज कॉपी राइटिंग, देन व्हाट विल यू टेल देम? बिकॉज ओके। आई नो कि लाइक आज भी काफी लोगों को कॉपी एडिटिंग एंड कॉपी राइटिंग के फील्ड के मतलब बारे में मतलब थोड़ा तो छोड़ो, बिल्कुल नॉलेज नहीं है। Okay, okay, let me tell you. So, wow, that's a very interesting bit. मैंने सच में कभी नहीं सोचा था रोहिल इसके बारे में कि कोई ऐसा सोचेगा. And I will actually share used it to with my colleagues think that tomorrow, way. you know. But yeah, this is a very nice perspective, very interesting. Thank you so much for sharing this. तो मतलब इससे मुझे ये पता चला कि मैंने अज्यूम ही कर लिया कि सब लोग को पता है, which is so wrong. Like how we assume कि everybody will be empathetic towards us knowing कि हम स्टैमर करते हैं, बट नहीं है ये. तुम उन्हें बताओगे नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा? So yes, thank you so much for Exactly. sharing this. So copy editing, like the very question is, so when we say copy means any piece of written document. It can be a story, it can be a news article, it can be a research paper, it can be your blog post. Simple. ठीक है. So copy editing हिंदी में भी होती है, इंग्लिश हर लैंग्वेज में होती है. I am an English copy editor. So basically, if Rohil is the writer, if you have written a blog post, then you are the writer or the author of that post, and I am your copy editor. That means you will send me that copy. So that blog post is now called a copy. It will come to me. I will check it. Check से मेरा मतलब है the punctuations, of course, the grammar part, of course. Basically हर चीज जो grammarly करता है. Now that is one part of it. Second is the topic as a whole. Is it effectively conveying what you intended to convey? So copy editing involves talking to the author also, wherein you like, मतलब जैसे मैं अभी कार वाले की पे करती हूँ, तो न्यू स्टोरी अगर कार वाले की वेबसाइट पे गई है तो इट विल कम टू मी फर्स्ट फ्रॉम द राइटर. So like if it is about a new car launch, so has the author effectively conveyed all the information in it? Is it factually correct? That is also a part of it. So that is the thing. And is it structured properly? So there are certain rules to a new story की writing. लाइक आपको सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो सबसे पहले लिखने को रहते हैं. मतलब आप कभी भी कोई न्यूज अगर पढ़ते हैं दैनिक भास्कर, हिंदू पत्रिका में, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है वो सबसे शुरू के पैराग्राफ में रहता है. देन लाइक basically overall structure of the news, that is also what a copy editor checks. And they can entirely change the structure if they feel it is not correct. So that is the thing. In older times it was done manually, pen and paper पे. तो like पहले जब हमारे न्यूज़पेपर छपते थे, so there were symbols. मतलब कि कोई वर्ड अगर कट रहा है, मतलब इनके इनके प्रॉपर रूल्स थे, इनके सिंबल्स थे कि काटने के लिए एक लाइन लगती है. और कोई आपको ध्यान है तो अगर हम कोई वर्ड कभी इंसर्ट करते हैं किसी सेंटेंस में तो हम वैसा एरो सा बनाते हैं, राइट? सो दैट इज अ सिंबल फ्रॉम द कॉपी एडिटिंग की मतलब जो रूल्स हैं. सो वो सब चीजें हैं. बट अभी हमारे पास लैपटॉप डेस्कटॉप है, वर्ड है, तो थैंकफुली वो सब मुझे नहीं सीखना पड़ा. मुझे सिर्फ उसमें चेंजेस करने रहते हैं. एंड इन फैक्ट एवरी बुक दैट यू रीड गोज टू एन एडिटर. आप देखोगे, आप बुक के फर्स्ट सेकंड पन्ने पे वो बोलते हैं थैंक यू टू माय एडिटर. सो Yes. एडिटर अपना करियर कॉपी एडिटर या जूनियर कॉपी एडिटर से स्टार्ट करता है, फिर सीनियर कॉपी एडिटर बनता है, फिर वो डेवलपमेंटल एडिटर बनता है. सो जैसे अगर आप अटोमिक हैबिट्स पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अटोमिक हैबिट्स लिखने वाले जेम्स क्लियर ने तो लिख दिए 10,000 पन्ने, बट आपके पास तो बुक आई है वही 500 पेजेस की. सो वो 10,000 से 500 पे कौन लाया? वो एडिटर लाया.
उसने देखा कि मतलब उसको वो जो पूरा जिस भी इंडस्ट्री में है उसको पता होना चाहिए कि उस बाहर लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्या पैराग्राफ है जिसको आप हटा ही सकते हो, क्या पैराग्राफ को आप किस तरीके से बेटर लिख सकते हो कि लोगों को आपकी बात समझ में आएगी. सो बेसिकली इट इज not always the case, and actually it is never the case that an author or a writer writes a piece of copy and it conveys exactly what you think. So when an editor comes in, that person brings in a fresh perspective, a a new eye, मतलब एक वो जो होता है ना, एक ऊपर से वो पूरी चीज को देखता है, एंड वो दो मतलब उसका कोई पर्सनल उसके अंदर बेनिफिट नहीं है, वो दोनों तरफ से देख रहा है कि उसका अल्टीमेट गोल ये है कि जिसको वो चीज पढ़नी है, क्या वो चीज समझ पा रहा है. अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो वो काम एडिटर का है, वो उसको चेंज करेगा. Like in my case, there are times where our writers write very technical language about bikes or cars, but a person like my sister, she will not understand what are calipers, brake calipers in a bike. She will not know. So मैं उसको कैसे explain कर सकती हूँ, या किसी का mileage को मैं कैसे explain कर सकती हूँ better. So वो सब चीजें हैं. So that is what a copy editor does. Now you also mentioned copywriting. So I'm not a copywriter, but since you mentioned, I will tell you, copywriters are those who write copies again, any piece of writing which is intended to sell something. So copywriting is the term जो कि advertising में use करते हैं. So जैसे अगर हमें कोई मतलब कोलगेट के लिए अगर किसी ने ad लिखा है तो वो किसी copywriter ने लिखा है. So the purpose of a copywriter is to sell something. So they write it with that intention, uh, not like a story जहाँ पे आपका मकसद कोई चीज को बेचना नहीं है, not like your blog post. They have this very clear agenda कि जितना हम naturally organically हम वो बेच सकते हैं, and this does not include the jingles. It means like the whole concept of the ad or something. गॉट इट, गॉट इट. थैंक यू फॉर थैंक यू कि इतना अच्छे से एंड पूरा फुल डेप्थ समझाने के लिए. एंड ऑल्सो नाउ व्हाट आर दी लाइक आपने इस फील्ड में काफी सालों से काम किया है. सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर दी स्किल सेट रिक्वायर्ड टू बी अ कॉपी एडिटर? So to be a copy editor, you have to, I mean, in whichever language you want to be. हिंदी मतलब हर लैंग्वेज में होता है कॉपी एडिटर. सो यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर द लैंग्वेज. इट इज मतलब इट इज एडवाइजेबल अगर आपके पास उस फील्ड में मास्टर्स डिग्री है तो, क्योंकि यूजुअली जो हायर करता है वो वही देखता, मतलब सैड है ये पार्ट कि हम लोग हमारी मतलब स्किल को हम लोग डिग्रीज में नापते हैं, विच आई पर्सनली फील इज नॉट फेयर. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी जिनकी इंग्लिश मुझसे बहुत बेटर है, बट उन्होंने एमए नहीं करा हुआ है इंग्लिश में. सो बट अब कंपनीज ऐसे ही देखती हैं, बहुत दुख की बात है, बट यस दैट्स हाउ इट फंक्शंस. सो इट इज एडवाइसेबल इफ यू हैव अ डिग्री इन दैट लैंग्वेज. एंड द सेकंड इज दैट एक तो बहुत वो है कि यू नीड टू हैव दैट कैपेसिटी टू रीड इन डिटेल. If you don't think that you can read at a stretch, then I don't think copy editing is the field for you. And some basic soft skills like concentration, like I mean you need to be very disciplined, or you need to be very detail oriented. Like one comma missing somewhere can actually change the meaning of the sentence. So something like this where you have to be very detail oriented. You need to I mean, I think yeah, that's more or less of it. You need to be very detail oriented, and if you think you are good with language, if you think you are good with words, then yes. And
I feel, I don't think it is written anywhere, but I feel if you are a good writer, then you can be a good editor. I feel this. So, but it is totally up for debate. I think this way, it can be wrong. ओके एंड या एंड जैसे आपने पहले भी बताया था कि लाइक इफ समवन वांट्स टू स्विच इनटू द फील्ड ऑफ कॉपी एडिटिंग और इन द फील्ड ऑफ कॉपी राइटिंग so then first of all you said that they should have a master's degree and they should love writing and they should also have a habit of in-depth reading. And other than this, is there anything else which is required for someone to change their career into this field? So, not that I can think of right now. And when I said degree, I did not mean master's. Basically, I've seen Okay. people, I mean, any irrelevant degree where Hmm. where you can show that you have command over language. Like if somebody is just starting out their career, if they are pretty young, so just after graduation from like BA in English, they can also go for copy editing. You need to have the passion for language, so that is one thing. Basically, you need to be very passionate about the language. Like it can come across as funny, but I used to read dictionary as a kid. मेरे दादाजी Wow. तो डिक्शनरी मतलब वो जो पुरानी वो आती थी डिक्शनरी ब्लू कवर वाली. सो हाँ, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, हाँ हाँ राइट. बिग सो वन. हाँ द बिग वन. सो वो थी हमारे घर में. एंड माय दादाजी, आई वाज वेरी क्लोज टू माय दादाजी. एंड ही यूज्ड टू, क्योंकि उन्हें पता था मैं स्टैमर भी करती थी, तो वो मुझसे न्यूज़पेपर भी जोर जोर से पढ़वाते थे. सो विच एवर वर्ड आई यूज्ड टू फाइंड डिफिकल्ट, ही वुड से देख देख उसको डिक्शनरी में देख. तो फिर I used to read, and then from then I developed this habit of reading dictionary, and I would randomly turn pages and see, oh, this is a new word. Oh, this is a new word. So like this, I used to read dictionary. So I have just been fascinated with language as such, be it English, be it Sanskrit. I really love Sanskrit. I think I will do something in Sanskrit in life. मुझको नहीं पता कब, but कभी तो मैं कुछ करूंगी संस्कृत में. मुझे बहुत पसंद है संस्कृत. So वो है. Hindi also. Although Bombay has messed up with my Hindi, but yes. So Yeah, I can understand that because since I I have am been very agitated with it. But my when I talk to my parents in Hindi, my mother, she says, "ये क्या काका की हो गया तेरा, क्या बोल रही है तू?" I am from Jaipur, so I know how frustrated they get. So yeah, there's this thing. If you have to be very, well, if you like language as a whole, then of course it helps. If you like language, then you will definitely try to learn more about it. there. So yes, like I say, ki English is not a great language. It is not. Hindi is one of the best languages. Sanskrit is the best True. languages we have. But it's just that I enjoy English. So yeah, इंग्लिश में किसी चीज का कोई रूल नहीं होता है. Got बहुत ही वेग है. yeah, and also like ये आज के टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन each and every sector. So then what kind of changes are you seeing in this field due to technologies like the, artificial intelligence, machine learning, natural language processing, and then there are many more. yes. So basically grammarly I think हम सबको पता है. Most of us, हम सब, मतलब अगर आपने एमएस वर्ड पे या गूगल डॉक्स में काम करा है तो ग्रामरली आपको पता होगा. सो जिनको नहीं नहीं पता, ग्रामरली इज अ सॉफ्टवेयर which can correct your grammar. If you have written one paragraph, it will tell you what spelling is wrong and कहाँ पे क्या tense गलत है, and वो आप suggest कर सकते हो. उसका free version is more than good.
एंड पेड भी ठीक है, मतलब वो बस पैसे दे रहे हैं ये. सो द थिंग इज दिस, एंड यस, सो नाउ आई विल टेल यू, आई have writers with me, and we hear this quite often, कि why do we need you if we have Grammarly? And I keep on telling them, yeah, sure, why not, you use Grammarly, you तुम पैसे दे के लो उसका, मतलब पेड वर्जन लो, and then send me the copy. Copy means the news story. So still the structure, I mean the AI, so see how and I think मेरा engineering background थोड़ा helps me here, because I kind of understand how AI has been developed, how Chat GPT works, how Grammarly functions, क्योंकि ये सब large मतलब language models हैं basically. तो इनको एक डेटा सेट फीड करा हुआ है जिसके ऊपर वो लोग मतलब आपके आउटपुट will change according to your input, right? So I mean, yes, there are a lot of, I mean, at least पिछले एक साल में ये बात कई बार आई है कि लाइक कॉपी एडिटर्स और द like their, or copywriters in fact, their job is at risk. I say maybe the proofreader job is at risk, maybe, again maybe, क्योंकि वो काफी हद तक ग्रामरली कर लेता है, क्योंकि प्रूफ रीडर्स को ग्रामेटिकल एरर्स या पंक्चुएशन करेक्ट करने, तो वो आपने उनको सिखा दिया है. बट मतलब आपने सॉफ्टवेयर को या एआई को सिखा दिया है, बट व्हाट एटलीस्ट टिल नाउ वी हैव नॉट बीन एबल टू टीच द एआई इज हाउ वी थिंक. मतलब तुमने ही तो बनाया है एआई को, सो ईदर यू ट्रेन, मैं अभी फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ this discussion I will say chat gpt, but I mean all the AI, okay? So like अगर मेरे को chat gpt को कोई prompts देने हैं, so I was also working as a freelance content, मतलब as a freelance communications head for a company. So there I used to write mails and social media captions and all of this. So I use chat gpt extensively, but आफ्टर अ वाइल, क्योंकि मेरा बोलने का तरीका एक टाइप का है, तो मेरा सोचने का तरीका भी एक टाइप का है, सो मैं उसको इंस्ट्रक्शंस भी एक टाइप से ही दे रही हूँ. सो आफ्टर अ वाइल इट विल कीप ऑन गिविंग मी द रिप्लाईज इन अ सिमिलर टोन. So I'll give you a very simple example. My best friend's brother's wedding was in June. So she had to give a speech. सो माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू हेल्प हर. सो मैंने चैट जीपीटी को इनपुट दिया, मुझे उसके, वो अपने भाई के बारे में क्या फील करती है मुझको नहीं मालूम ना. सो मैंने थोड़ा बहुत रैंडम मतलब जेनरिक वर्ड्स लिखे, मैंने बोला कि तू थोड़ा फिल इन कर लेना. नाउ मी एंड माई हस्बैंड आर देयर सिटिंग इन द वेडिंग. शी स्पीक्स इट एंड माई हस्बैंड सेज दिस टू मी, ये तो चैट जीपीटी से लिखा हुआ है, तूने बोला तूने लिखा है ये. एंड आई वाज शॉक्ड. It's like, how the hell do you know this? So he also uses ChatGPT a lot for a lot of things. Now there's a certain pattern to it. You know that mechanical tone to it, so that you cannot bring. So maybe आपको अगर now जैसे कई बार ना कुछ अनाउंसमेंट्स रहते हैं कुछ कंपनीज के, तो वहां आप मे बी उनका यूज कर सकते हो, बट नॉट इन ऑल द एस्पेक्ट्स. एंड देन ऑल्सो you need to have a human touch to it. And still जो कोई भी कॉपी का या किसी भी आर्टिकल का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर आपको शेप देना है, so you need a human to do it. Yes, there are various AIs who have done it brilliantly, but if you go into the detail, you should also see the prompt that was given to them. So when I saw that जितना टाइम मैं वो prompt लिखने में दूंगी, honestly मैं खुद ही वो आर्टिकल लिख लूंगी उतनी देर में. तो so it's like that. So that is more or less the case. So yes, there have been challenges. People keep on questioning us, and for me, I always tell them this one thing: sure, go ahead, use it for a month, and then come back to me and then tell me.
I will resign from my job if it is great. I mean, great, I will do something better in life. Just tell me. So, but at least till now, it has not been the case. And maybe because of that, and also because I have engineering background and I have friends who work in this field, I am updated with this sector. So I keep on reading a lot about it. So, yes, it is evolving. I don't know if it can replace this job completely uh, as of now, but I know one thing for sure, that for it to replace, it will take quite a lot of time, and still there will be that missing human connection, which I don't see AI bringing in right now. क्योंकि मैंने बीच में स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स भी करा था, एंड there they teach you how to write about human emotions, and I don't think AI can do that. You need to know human emotions for that. You need a human for that, basically. हाँ ट्रू। एंड जो भी अभी आपने बताया, जस्ट आई गेस कुछ 7-8 दिन पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में देखा कि शायद आईआईटी के डायरेक्टर ने बताया कि डोंट वरी, टेक्नोलॉजी इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन रिप्लेस ह्यूमन बींग्स। एंड ये उन्होंने बताया कि लाइक अगले 30 to 40 साल तो ये बात बिल्कुल नहीं होने वाली है। सो देन वॉट एवर यू जस्ट शेयर नाउ, the same the director from IIT also shared the same. Oh, great. I am happy that at least I am on the same page. And and also one more thing. So I was listening to a podcast, and उसमें किसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि whenever new technology comes, there's always a threat कि लोग jobless होंगे. Like जब electricity आई थी, तो a lot of people went out of jobs. That does not mean कि दुनिया खत्म हो गई, ये है वो है. New jobs are also created, right? So you need to learn that technology and adapt it. So now there are copywriters who are smart enough to give prompts, and मतलब for example, अगर मुझे मतलब I don't know, if I have to write an article about TISA and I am not a stammerer, मैं रिसर्च कर रही हूँ, सो आई विल गिव द प्रॉम्प्ट टू चैट जीपीटी या बार्ड जो भी है. तो जो मैं पहले गूगल करके 10 वेबसाइट पे जाके मैं सर्च करती थी, अभी मेरी रिसर्च के वो आधा घंटा हैज कम डाउन टू वन प्रॉम्प्ट ऑफ चैट जीपीटी, एंड देन आई विल राइट इट ऑन माई ओन. सो दैट टाइम ड्यूरेशन इज लाइक, मतलब मेरा ही टाइम बच रहा है, राइट? सो इफ आई वाज चार्जिंग से 10 रुपए फॉर दैट article, so now instead of spending 2 hours, I am spending half an hour and I am getting the same amount of money, right? So that is how I can also increase my income by learning the technology also. So I learned this, I mean, ये मुझे उनका मैंने एक पॉडकास्ट में ही सुना था, मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी कि राइट, people who are ever, मतलब people who say कि मतलब who are scared of it, basically they are the ones who might go out of job. But if you are ready to accept it, then wow, it always comes down to acceptance, right? True. Very true. Yeah. Beat yourself for the new changes in the world. Yeah, so then now before we shift to the session, so you also practice mental health advocacy, right? So then, like, could, could you please just tell in short that how can we maintain a good mental health? Yeah, so first thing, when I say mental health advocate, I mean I'm someone who promotes mental health issues. Like there should, मतलब अभी क्या है, एटलीस्ट हमारी जनरेशन तक भी
the new generation is very open about mental health, which is great, I think. But hardly हमारी generation में भी अभी भी इनफैक्ट लोग हैं who hide their mental health issues, and I personally feel कि आई मे बी मुझे कभी डायग्नोज नहीं हुआ, बट मे बी बिकॉज ऑफ स्टैमरिंग और बिकॉज ऑफ लो कॉन्फिडेंस देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम इन लाइफ जब आई वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन में भी मुझको पता भी नहीं था, शायद मुझसे बाहर भी निकल गई हूँ, बट देयर आई एम श्योर देयर मस्ट हैव बीन अ फेस इन माय लाइफ, और देयर must have been a phase where I have been anxious throughout. So there must have been some anxiety disorder or something like this. So I feel that people should be aware of it and we should talk about it more often. Like हम लोगों ने उसको इतना वो मतलब बना दिया ना कि यार पता ही नहीं क्या दिमागी बीमारी हो गई है कि उसको तो मतलब साइकेट्रिस्ट इज लाइक कि भाई पागल खाने जाना पड़ेगा अब तो. इट्स नॉट लाइक दैट, right? It's not like that. And honestly, I come from Jaipur, a tier 2 city but a state capital. ठीक है, my parents are well educated, my in-laws, everyone, but still अभी अगर हमारे घर में भी कुछ होगा तो आई एम 100% श्योर दे विल बी लाइक कि ओहो क्या हो गया यार इसको, क्या हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा खा ले पी ले. नो, दैट्स नॉट द केस. इफ यू हैव फीवर विल यू से दैट टू देम? आप डॉक्टर के जाके उनको बोलते हो ना कि मतलब अगर मुझे वायरल है तो मैं पूरा 5 दिन का या 3 दिन का जो डॉक्टर ने मुझे डोज दिया है वो मैं लेती हूँ. मैं उससे पहले बंद नहीं करती हूँ जब तक मेरा डोज फिनिश नहीं होती है. सेम इज द केस विद मेंटल हेल्थ. यू मे नॉट रिक्वायर medication, but you need to seek a counselor or a therapist who can help you. So, and basically I went into, so this is what mental health advocacy is. I know it sounds like mental health advocate की जैसे मैं कुछ legal चीज भी कर रही हूँ, which is not the case. When it's just a phrase. So मतलब ये मैंने खुद के लिए कॉइन करा है कि मैं मेंटल हेल्थ को प्रमोट करती हूँ, बेसिकली मेंटल हेल्थ प्रमोटर, लाइक आई एम स्टैमरिंग प्रमोटर वैसे करके. तो लाइक वी ऑल आर समवन हु प्रमोट स्टैमरिंग वैसे. So I promote mental health awareness because I saw a lot of people around me, like in a very close friends, go through depression and anxiety disorders, and they were diagnosed pretty late, and मेनली बिकॉज किसी से बात ही नहीं कर पाए, बिकॉज हमेशा वो हमें लाइक मतलब मेरे को लगता है कि इट इज अलॉट रिलेटेड विद स्टैमरिंग, क्योंकि जैसे हमें स्टैमरिंग के साथ हम एक शर्म को एसोसिएट कर देते हैं, हमें वो जजमेंट का फियर है. सेम मेंटल हेल्थ की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो आपको डिप्रेशन हो, कोई एंजाइटी डिसऑर्डर हो, कुछ भी हो, कोई ट्रॉमा हो, एनीथिंग, वी जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट थिंकिंग कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे यार, पता नहीं क्या है, बट दैट्स नॉट द केस. सो whenever I get a chance, I always listen to people, and one of the biggest contributor to this has been stammering, क्योंकि ये चीज मैंने एक्चुअली सचिन सर से सीखी कि टू बी I mean to accept yourself you need to be a good listener yourself, राइट? मतलब अगर आपको सामने वाले को अपनी बात सुनवानी है तो पहले आप खुद तो सुनना सीखो. मतलब अगर आप ढंग से एक्टिवली नहीं सुन रहे हो तो कोई आपकी बात क्यों ही सुनेगा. सेम गोज विद एनी पर्सन हु हैज एनी मेंटल हेल्थ इशू टू. सो that is where it came from, and then I had a lot of friends around me go through it. Even I also took therapy sometime in between. I was diagnosed with chronic anxiety. So वो है चीज, and I had shared it with people around me कि I've gone to a therapist. I had not taken medical help anytime, but uh, it's not like I was not talking to my family. It's not like कि मेरे घर वाले सपोर्टिव नहीं थे. It's not like कि मेरे हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है. मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है, मेरे बहुत, इनफैक्ट एंटायर टीसा इज देयर, एवरीवन इन माय ऑफिस इज देयर, माय फ्रेंड्स आर देयर, माय फैमिली इज देयर, बट स्टिल देयर मतलब वो जो थेरेपिस्ट है वो प्रोफेशनल किसी वजह से, राइट? इफ आई
they know certain ways in which they ask you questions इनके जब मतलब I realized and I find it a fantastic skill. I think मेरे में तो नहीं है कि how they ask you the questions जो आप खुद से पूछ रहे हो 15-20 सालों से, but they ask you in a certain way कि आप खुद ही उनका जवाब दे रहे होते हो. So the answers are within you, but they just streamline your thoughts. So they are trained for that. And also I think because वहां पे आपको वो judgment का fear नहीं है, right? They don't know you. They don't know your history. They don't know your family, friends, or anyone. They just know whatever you will tell them, right? So you can actually share anything you want. So that also comes there. So I always feel if there's something that is bothering you, or if you feel you have been feeling low for a long time, और मतलब देर आर सम सिम्टम्स ऑल्सो लाइक अगर आप काफी टाइम से रात को नहीं सो पा रहे हो, आपको वजह नहीं पता, इफ देर इज समथिंग इन योर लाइफ किसी भी एस्पेक्ट में विच इज ट्रबलिंग यू, तो आई ऑलवेज सजेस्ट गो टू अ थेरेपिस्ट, टॉक टू देम, एंड ट्रस्ट मी इट हेल्प्स, ट्रस्ट मी इट हेल्प्स. नाउ हियर कम्स दिस इशू कि मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि यार वो तो ना इतना पैसे लेते हैं, ये है वो है. Then comes, if you'll not ask, you'll not get it. तुम उनसे बोलो, I have requested my therapist कि I don't have enough money to pay you, and she reduced the fees by 50%. आपने पूछा तो उन्होंने करा ना, हम जाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा. सो देर आर थेरेपिस्ट, देर आर न्यू मतलब बेसिकली जो नए ग्रेजुएट करते हैं, they want to make a career as a counselor, they charge pretty less too, and then there are free counseling sessions too, so we can always go there. So I feel yes, friends से बात करना सब जरूरी है, but if you think some कि कोई चीज अगर काफी टाइम से चल रही है तो we should always go to a therapist and talk to them. It really helps. मुझे बहुत हेल्प करा है, and I've seen people around me getting help by it. And it's as simple as just मतलब वो एक वो होता है ना, एक बार एक हिम्मत करके वो एक कॉल कर लेना, एक बुक कर लेना अपॉइंटमेंट, जस्ट दैट वन कॉल अवे. Got it, got it. We are really thankful to you for sharing the importance of mental health, and also the importance of going out and asking for help. That is much more important. And Yes, correct. Thank you for putting it in the right words. Yes. क्योंकि क्योंकि मैं भी ऐसा पहले सोचता था कि लाइक जैसा बॉलीवुड में दिखाते हैं कि नहीं नहीं मैं किसी से मदद लूंगा ही नहीं, और मैं लूंगी ही नहीं, मैं जो जो भी है मैं ये खुद से ही करूंगा या करूंगी. बट देन नाउ रिसेंटली आई हैव लर्न कि मदद मांगना ही सबसे बड़ी हिम्मत की बात है. And we do get benefited from it. करेक्ट मदद. करेक्ट करेक्ट. ये मतलब ये एक बहुत ही कॉमन सेइंग है इंग्लिश में, इफ यू डोंट आस्क फॉर इट यू विल नॉट गेट इट. मतलब Exactly. पूछने में कोई बुराई नहीं है, राइट? वर्स्ट इज सामने वाला मना कर देगा. हाँ. मतलब तो अगर आप नहीं पूछ रहे हो तो वैसे भी आपको नहीं मिल रही है कोई चीज, तो Right. एटलीस्ट पूछ ही लो, राइट? So that's the thing which applies to almost everything in life, and especially for mental health. And yes, true, we should always ask for help, and it really helps you yourself. So yes, that's true. True, true. And wow, what a session it was. I really enjoyed it. I really enjoyed. Thank you so much. I, I hope I, मैंने बोर नहीं कराया आपको अपनी नहीं, कहानियों से. बिल्कुल नहीं. एक्चुअली मैंने जस्ट अभी टाइम देखा. नाउ द टाइम इज 5:43, and then that's when I thought कि नहीं, now we should move forward to the last section, which is Q&A section. So जिनको भी सवाल पूछना है वो प्लीज उनका जूम पे
ये पूछ मतलब हैंड रेस की कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी विल गो विथ सोहन या सो या सोहन। श्योर। गुड इवनिंग एवरीवन। या तो मैं जी आपका स्टोरी सुनकर अंटिल नाउ मुझे काफी कॉन्फिडेंस मिला। सो करेंटली आई एम 24, कि एक डर होता है कि आगे जाके क्या करेंगे। तो आपकी स्टोरी सुनकर काफी कॉन्फिडेंस मिला। और तो मेरे एक्चुअली बहुत सवाल है। पहला सवाल ये है कि व्हेन आई वाज 22, मैं सोच रहा था कि 2 साल बाद, 3 साल बाद ठीक हो जाएगा और फिर आगे का यू नो कुछ बड़ा हो जाएगा। बट एक्चुअली स्टैमरिंग स्टेज लॉन्ग देन वी थिंक। तो तो मेरा सवाल है कि आपको कब रियलाइज हुआ कि इट विल स्टे लॉन्ग और मुझे उसके साथ ही डील करना है। और सेकंड सवाल है कि आप यू वर स्पीकिंग फॉर टू आई मीन सो लॉन्ग, आई मीन फॉर फॉर मोर देन 1.5 आवर। तो है तो बस 20 to 30 मिनट्स बोलकर ही मेरे सांस फूल जाते हैं। तो हाउ टू स्पीक फॉर लॉन्ग टाइम। Thank you so much, Sohan, for the question. I will answer the second one पहले। कि ऑनेस्टली मुझको भी नहीं पता चला कि मैंने ने बोला है। अभी जब रोहित ने बोला तभी मुझे रियलाइज हुआ। एंड आई डोंट नो, मुझे पास इसका कोई जवाब नहीं है। ओके इट्स जस्ट दैट कि मतलब हमने बातें करी, इट वाज नॉट लाइक कि मैं स्पीच दे रही थी या मतलब मेरे जो अभी हमने किया इसका कोई ऐसा मतलब मुझे वो नहीं था कि मुझे ये बात किसी को कन्विंस करनी है या मुझे कन्वे करनी है। इट वाज लाइक अ गपशप, राइट? तो मतलब ओके। जैसे हम घर में मतलब मैं मेरे भाई बहनों के साथ बैठती हूँ तो कई बार हम शाम को बैठते हैं 6 बजे रात को, मम्मी चिल्ला रही है तब तक हम बातें कर रहे हैं, जब तक मम्मी वो उठाती नहीं है कि काम करवा लो हम बातें कर रहे होते हैं। तो वो वैसे ही था मेरे लिए। मैं बस जैसे जैसे जो जो याद आता जा रहा था मैं बोल रही थी, बीच में रोहित ने भी बहुत हेल्प करी, तो वो सब चीजें थी। तो ऐसा तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। एंड यस फॉर श्योर अगर मुझे आप स्टेज पे खड़ा करोगे तो मुझको नहीं लगता है मैं 2 मिनट से भी ज्यादा बोल पाऊंगी। मैं टोस्ट मास्टर्स में गई थी एंड I could not speak for more than 30 seconds. So वो तो नहीं है। और या सो दूसरी चीज जो कि मतलब कब मुझे रियलाइज हुआ कि स्टैमरिंग कहीं नहीं जाने वाली है, मेरा हिस्सा है, मतलब ये मतलब इसके साथ ही जीना है। सो थोड़ा बहुत मुझे हमेशा से पता था क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरे फादर स्टैमर्स, माय दादाजी यूज्ड टू स्टैमर, माय बुआ आल्सो स्टैमर्स इन फैक्ट। सो मतलब मैंने तीनों में अलग अलग लेवल की स्टैमरिंग देखी है। सो और मुझे वो भी दिख रहा था कि कैसे मेरे दादाजी अपनी स्टैमरिंग को संभाल रहे हैं। मतलब नाउ आई नो, मतलब ही इज नो मोर बट नाउ आई नो कि ही यूज्ड टू डू बाउंसिंग अलॉट। ओके। ओके। हाँ हाँ, yes. Now I know my father also used to do, मतलब he still does bouncing a lot, but my बुआ she pauses. So ओके। ओके। वो लोग टेक्निक्स। कभी टीसा नहीं आए हैं, वो टीसा नहीं आए हैं, वो किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी नहीं गए हैं। बट वो जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, जितने मतलब आप जितना बढ़ते हैं हम उतने ज्यादा लोगों से मिलते हैं, तो हम लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखते रहते हैं। तो वो आप नेचुरली अपनी बोली में अडेप्ट कर लेते हो। इनफैक्ट वी आर लकी कि या। टीसा ने हमें वो टेक्निक्स, लाइक यू सेड यू आर 24 राइट नाउ, राइट? So you have learned this at 24. So by the time you are 30 or 32, you would have learned a strong command over the way you speak. So then आप जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ रहा है कि मुझे किस वर्ड पे बाउंस करना है या किस पे स्टैमर करना है।
आई डू थिंक अबाउट इट, बट जब मुझे अगर कोई स्पीच देना रहता है तो मैं जेन्युइनली मैं कांच के सामने कम से कम 20 बार प्रैक्टिस करती हूँ, कम से कम मैं बोल रही हूँ सच में। मैं जेन्युइनली मैं एक एक वर्ड मुझे पता रहता है कि यहाँ पे अगर मुझे एडिटर बोलना है तो मैं एडिटर बोलूंगी या एडिटर बोलूंगी, तो वो मैं प्रैक्टिस करके जाती हूँ। बट नॉर्मल बोलचाल में मैं नहीं करती हूँ। सो यू लर्न दिस विद द टाइम। बट जो एक पॉइंट जो मेरी लाइफ में था वो आई थिंक जयपुर वर्कशॉप थी। सो जयपुर में वर्कशॉप हुई थी, वेयर आई वॉलंटियर्ड एंड सचिन सर आए थे। एंड वहां उन्होंने जो एक्सरसाइजेस करवाई हैं, ही वी ऑल मेट, ही मेट विद माय पेरेंट्स आल्सो, एंड दैट वाज आई थिंक वो एनवायरनमेंट जो सचिन सर ने दिया उस टाइम पे, आई फेल्ट कि मतलब हमेशा से पता था कि स्टैमरिंग को मैं ऐसा इरेज तो नहीं कर सकती हूँ, तो वो रहेगी, बट कैसे काम करना है। सो दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि अगर कम नहीं भी हो रही है तो भी इट इज ओके, पीपल आर देयर विद मी। सो ये या कभी नहीं हुआ कि कम कब होगी या कम हो गई है क्या, इट वाज या जस्ट कि जितनी है उतनी रहेगी तो भी आई एम फाइन, आई कैन लिव विद इट, ये या हुआ। हाँ तो राइट, कि उसके बारे में सोचना ही नहीं है, जो होगा होगा इन दैट वे। या करेक्ट करेक्ट, मतलब अगर मैं स्टैमर कर रही हूँ मेरे मैनेजर के सामने भी तो भी इट इज ओके, ओके, वो हाँ वैसी वाली बात है। हाँ, ओके, या थैंक यू। Thank थैंक you. यू सो मच, थैंक यू। Now we have a question from Gajendra Sharma. Yeah, hi. Yeah, हाय। so firstly, thank you for sharing a wonderful story, and that's actually very insightful. And actually, I have two questions. So first is during our corporate journey, what step we should take to move to next level and quality we should develop. That is the one question. And second is regarding stammering, regarding stammering, what step you have taken to manage your stammering, after joining the TISA, which really have helped you. Yeah. So thank you so much, Gajendra. First of all, for corporate to take the next step, say if I am in the same company, right? Like in my previous company, I think the only thing that matters in any office is your work. If you're good with your work, then वो दिखता है सीरियसली। मतलब योर मैनेजर नोज, मतलब वो होता है ना कि जैसे हमारे माँ बाप को पता रहता है कि कौन सा बच्चा शैतान है, कौन सा सिर्फ मतलब दिखाने के लिए पढ़ाई कर रहा है और नीचे उसने नॉवल खोल रखी है, वो वैसा ऑफिस में भी है। योर मैनेजर नोज if you are good at your job or if you are trying to fool him or her. So आप कितना भी हक लाते हो, कितना भी आप ज्यादा बोलते हो या कम बोलते हो, डज नॉट मैटर इफ यू आर नॉट गुड विद योर जॉब। सो फर्स्ट थिंग इज यू शुड बी गुड विद योर जॉब, एंड सेकेंडली आई थिंक इज कि हमें थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ता है अगर हमें मतलब ग्रो करना है। से कोई अगर नया मतलब जैसे अभी कॉपी एडिटिंग की कंटेक्स्ट में अगर बताऊं, तो कि अगर कोई नई न्यूज आती है या कोई मतलब ठीक है, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल ही देती हूँ, जैसे कि अभी एआई का था, तो हम कि भाई इट इज हैम्परिंग अस, ये है वो है। सो माय सीनियर आस्क्ड मी कि मतलब उन्होंने जनरली मीटिंग में पूछा था कि क्या फर्क पड़ रहा है। सो सिंस आई रीड अबाउट इट, आई टोल्ड हिम इन द मीटिंग। नाउ 10 साल पहले वाली सौम्या या 5 साल पहले वाली सौम्या मीटिंग में बोलती ही नहीं थी, इस डर से कि मैं तो हकला जाऊंगी, मैं तो अटक जाऊंगी। बट अभी मैंने बोला मीटिंग में, हकलाते हुए बोला कि मेरे जो भी विचार है एआई के बारे में। सो 2 weeks later he calls me and he says can you take a session on एआई किसी और टीम का। सो दैट इज हाउ ही गॉट टू नो कि आई नो दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड उन्होंने खुद ने मुझे अप्रोच किया। तो अगर आप मतलब खुद पे भरोसा रख के अगर आप इनिशिएटिव लोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। मतलब लोग कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज को पहचानना चाहिए, ये मुझको नहीं समझ में आता कैसे पहचानना चाहिए। आई थिंक
we can create opportunities if we ourselves are confident about what we do. So वो चीज है. एंड वर्क स्पेस में स्टैमरिंग की टेक्निक से और मतलब टीसा से जुड़ने के बाद जो फर्क पड़ा है वो यही है कि मैं लाइक आई सेड, मैं अभी ना मीटिंग में बोलने से मैं घबराती नहीं हूँ. आई जस्ट स्पीक इट, चाहे मैं हकला रही हूँ नहीं हकला रही हूँ तो भी. एंड नाउ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई फील कि शुरू में ना थोड़ी सी देर वो डर लगता है, फिर जब आप अपने टॉपिक पे बात करना स्टार्ट करते हो तो आप भूल जाते हो कि हकलाहट क्या होती है, स्टैमरिंग क्या होती है. आप एक फ्लो में उस टॉपिक के बारे में ही बात कर रहे होते हो. So that is the thing that TISA has taught me, कि I need to accept the way I am and should present me the way I mean should like just present myself the way I am. That is the thing. Thank you. And Dr. Sachin wants to speak something. Dr. Sachin? Soumya, can you hear me? Yes, sir. How are you, sir? Wow, what a pleasant surprise. I'm so I'll just happy take to see you. I'll just take 20 seconds. I wanted to thank you, Soumya, for this Gup-Shap, and also for a lot of things which you have done in the past for TISA, like conducting that self-help group in Jaipur and conducting that first workshop. And I just want to clarify this thing that TISA cannot take any credit in what Soumya has achieved in her life. Because the credit really goes to her initiative, her sense of involvement, the way she took the lead and she said, "I will reorganize this self-help group in Jaipur in Rajasthan. I will start this. I will conduct this communication workshop." So I just want to say hats off to you and thank you so much for sharing your thoughts. And it's so nice to see you after such a long gap. Take care. Thank you so much, sir. I think you are way too humble. I don't know what to say. Sachin sir has been guiding me for all these years. Even when I was not active in TISA, I have been in touch with him on and off. And thank you so much, sir, for your guidance. And I don't know what you say, but I give the credit to TISA for all that I am, because yes, it definitely taught me the meaning of acceptance, and I think that's the core of what I am right now. So yes, thank you so much, sir. It is so good to see you. I cannot tell you how happy I am. Thank you so much, Royal. Thank you, sir. Thank you. Now we will have just one last question from Rajat Thakur. Okay, I guess I guess he is not in this meeting. So now the question is from Laksha. Laksha, actually you are not audible. Could you please type your question? Just a second. Now, yeah, now you are unmute. No, we can't hear you, Laksha. Sorry. Okay, so now taking a question from Ravi. रवि जी सर। हाँ हाँ, आपको कुछ सवाल पूछना है? जी सर। पूछिए। एक्चुअली मेरा ये सवाल था कि मेरा दो क्वेश्चन है। पहला ये कि मैं जो है कि अपना जो बीटेक में ना
किया हुआ हूँ, ठीक है। और और ये है कि जब मैं जो है कि अ, अपने फ्यूचर के लिए जब मैं सोचता हूँ तो मैं काफी जो है कि नर्वस हो जाता हूँ कि मैं मेरी स्टैमरिंग जो है कि मेरे बीच में आ रही है। और इस टाइम जो है कि मैं जो गेट की भी वो कर रहा हूँ प्रिपरेशन। और उसके साथ मैं ये सोचता हूँ कि मैं साथ ही साथ जो है कि बच्चों को वो पढ़ाऊँ ट्यूशन। तो उसके लिए मुझे जो है कि बहुत सारे कॉल भी आते हैं कि पेरेंट्स की कि ये एक नंबर है, आप पेरेंट्स से इनसे बात कर लो। तो उस दौरान जब मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ तो तो मुझे काफी वो होती है नर्वस कि मैं कैसे बात करूँ या फिर मैं कैसे उनसे बात करूं। मगर फिर भी मैं ये भी डर भी लगता है। फिर भी मैं एक दो कॉल तो कर ही लेता हूँ और उसके बाद वहां पे जाता हूँ तो कुछ कुछ कोचिंग में मुझे एक्सेप्ट कर ना लेते हैं और बहुत सारे में एक नहीं भी। तो यही सिर्फ पूछ रहा था कि इसको मैं कैसे वो करूं मैनेज। हाय रवि, थैंक यू सो मच ये पूछने के लिए। सो बेसिकली जो मेरे को आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट कि आपने टीचिंग को एज एन ऑप्शन कंसिडर करा है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हर कोई टीचर नहीं बन सकता है। अगर आप में वो स्किल है तो आई थिंक आपको डेफिनेटली करना चाहिए। मतलब इट अकॉर्डिंग टू मी इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन डू, क्योंकि आप इतने सारे लोगों को पढ़ा रहे हैं। एंड जो मुझे लगता है कि आपको मतलब आपको वो नर्वसनेस उस मतलब पहले से ही है कि आप हकला जाएंगे पेरेंट्स के सामने, तो क्या वो अपने बच्चों को आपके पास भेजेंगे पढ़ने के लिए या नहीं भेजेंगे। तो देखिए, पहली बात तो ये कि हर पेरेंट अपने बच्चे का बेस्ट चाहता है, तो वो अगर नहीं भी भेज रहे हैं तो वो उनका डिसीजन है अल्टीमेटली। सो आई डू नॉट थिंक कि मतलब अगर उन्होंने नहीं भेजा है तो वो आपकी वजह से नहीं है, या तो मतलब हम उनका सोच नहीं चेंज कर सकते हैं। राइट। सो वो मेरे ख्याल से आप एक बार अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि वो अगर नहीं भेज रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो उनकी चॉइस है। सेकेंडली आई फील जैसे मुझे ऑनेस्टली इस चीज में टीसा ने बहुत हेल्प करी है कि देर वर मेनी मॉक इंटरव्यूज या काफी ना मतलब प्रैक्टिस सेशन जो हम करते हैं कॉल पे या वीडियो कॉल पे, तो वो सब भी काफी हेल्प कर सकते हैं। एंड मुझे तो बहुत हेल्प करा है, क्योंकि हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उससे हम लोग हमारी खुद की बोली को और अच्छे से पहचान पाते हैं। राइट। मतलब जैसे वो होता है ना कि बचपन में हमें वो बार बार एक ही तरह के पेज पे वो राइटिंग करने को बोलते थे कि ये वर्ड को 10 पेज पे लिखो और वैसे करके। सो आई थिंक वो अभी अगर हम जितना अपनी स्पीच के साथ करते हैं उतनी हमें हेल्प मिलती है। और अभी आई जेन्युइनली मिस वो सेशंस, एंड मैंने कई बार कोशिश भी करी है कि मैं मुंबई एसएचजी जा पाऊँ। बट जो हम वहाँ पे मतलब जो हम एसएचजी ग्रुप में, या अगर आप एसएचजी नहीं जा पाते कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन भी बहुत सेशंस हम करते हैं जहाँ पे हम लोग कॉल पे प्रैक्टिस करते हैं, मॉक इंटरव्यूज करते हैं, या रैंडम आप किसी भी आपके ग्रुप में किसी को भी फोन करके आप 5 दिन में क्या करा वो भी डिस्कस करेंगे ना, तो भी आप अपनी बोली के पैटर्न को बहुत समझेंगे। सो जितना हम अपनी आवाज के साथ कंफर्टेबल होंगे उतना ही हमें कॉन्फिडेंस आएगा। फिर चाहे आपको पेरेंट से बात करनी है, किसी कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करनी है, गेट के लिए बाद में मतलब आपका गेट क्लियर हो जाएगा तो फिर जब आपको बाद इस में बार मैम इस बार मेरा गेट वो है क्लियर है। इस बार कल ही आया है। ग्रेट, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर तो क्या ही है, मतलब फिर आपको क्या डर है, फिर तो वाओ, आई थिंक ग्रेट।
आई डोंट थिंक फिर मेरे से आपको कुछ पूछना भी चाहिए. यू आर ऑलरेडी क्वालिफाइड. मैं क्या बताऊँ आपको. अब तो आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हो. अब तो कोई मतलब सी देखिए, जो मैंने अभी उनके करियर वाले क्वेश्चन पे कहा था कि एक तो होता है स्किल सेट. तो स्किल सेट तो आपके पास ऑलरेडी है. सो और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है. बाकी तो फिर हमने खुद ने ही खुद का बैरियर बना रखा है. जो मैंने कहा कि जैसे वो जो सीईओ मेरे प्रेजेंटेशन में उठ के चले गए थे, वो इसलिए नहीं गए थे कि मैंने ढंग से प्रेजेंटेशन तैयार नहीं किया, मैंने ढंग से प्रिपेयर नहीं करा, क्योंकि उनको दिखा कि मैं खुद ही अपना नाम नहीं ले पा रही हूँ. शायद इसलिए वो चले गए, या फिर शायद वो खुद अनकंफर्टेबल हो गए उस सिचुएशन में. तो लोगों के, हमको स्टैमर करते हुए देख के लोगों के कई बार खुद के फियर बाहर आ जाते हैं. आई हैव सीन दिस. लोग खुद इनसिक्योर फील करते हैं उस सिचुएशन में हमारे साथ. उनको समझ नहीं आता है कि वो कैसे रिएक्ट करें जब हम स्टैमर कर रहे हैं. तो वो कुछ भी अटपटा बर्ताव करते हैं. तो मैं उस सिचुएशन में हंस के खुद ही बोल देती हूँ, हाँ मैं थोड़ा हकलाती हूँ, आई नो अजीब लगता है, बट डोंट वरी, आपके बच्चे को पढ़ाने में वो समस्या नहीं आएगी. तो मतलब कि गेट तो क्वालिफाई आपने करा ही है ना, तो भाई डिग्री ये तो सामने ही दिख रहा है, तो अब और क्या चाहिए. सो आई थिंक, आई फील कि प्रैक्टिस सेशन कैन हेल्प यू अ लॉट. बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस कहानी, आई ऑल्सो डोंट थिंक कि मैं क्वालिफाइड हूँ इस पे आपको कोई भी एडवाइस देने के लिए. हमने गेट क्लियर करा हुआ है. मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है उस डोमेन में. So I don't think I'm the best person to ask this. Maybe Sachin sir or somebody can guide you better on this. But yeah, this is what I feel. But thank और you. मैम समझा कि मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ. और मैम मेरा ये सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैम मेरी जो है थोड़ी सी इंग्लिश जो है ना वीक है, और इस वजह से मैम थोड़ा सा ये भी ना डर एक लगता है कि जो है कि पेरेंट्स का ना क्या सोचेंगे कि इनकी ना इंग्लिश जो है कि ना वीक है, और ये पता नहीं मेरे बच्चों को पढ़ा पाएंगे कि नहीं नहीं पढ़ाएंगे. मैं मगर उनसे ये चीज बोल रहा हूँ मैम, जो है कि मेरी मैथ और साइंस स्ट्रांग है, और मेन तो यही दो सब्जेक्ट होते हैं जो आगे चल के ये जो हमेशा वो आपको हेल्प करेंगी. Correct. इंग्लिश तो हाँ, फिर मैं तो यूट्यूब से ही देख के, मतलब पहले मैं सीख के इंग्लिश, तो फिर मैं जाके उनको वो करता हूँ कन्वर्ट. बेस्ट. ऑलरेडी आप वो चीज प्रैक्टिस कर ही रहे हैं. मैं आपको बताती हूँ, मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ, हमारा तो काम ही भाषा का है, राइट. सो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है इधर, वो हिंदी, मतलब मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, वो हिंदी को हेड करती हैं, तो उनकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है. तो जैसे उनका कई बार मेरे साथ वाले लोग मजाक बनाते हैं, तो वो एक ही बात कहती है कि मुझे इंग्लिश से लेना देना ही नहीं है, मेरा काम हिंदी का है. तुम अगर हिंदी में कुछ मेरे काम में गलती निकालते हो तो जरूर मुझे बुरा लगेगा, पर इंग्लिश में तुम मेरा मजाक क्यों बना रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो मेरा काम वैसे भी नहीं है, वो मेरी एक्सपर्टीज है ही नहीं. सो वही चीज बेसिकली जो आपने कही कि मैथ्स और साइंस है, तो उसमें आप परफेक्ट है, करेक्ट, और गेट क्लियर है, सब कुछ है. तो अगर वो आपको इंग्लिश पे जज कर रहे हैं, तो वो तो उनकी समस्या है, आपकी समस्या नहीं है. उनको शायद अपने पैरामीटर्स चेक करने चाहिए. बाकी तो यस, आई अग्री. जैसे आप खुद ही अभी आपने कहा कि आप यूट्यूब पे जाके वहां पे लैंग्वेज सीख लेते हैं. एंड आई थिंक अगर आपको लैंग्वेज और सीखनी है तो काफी सारे एप्स हैं, मैं आपको बता भी सकती हूँ. लाइक दे कैन हेल्प यू अगर आपको जेन्युइनली सीखना है तो. बट उसका मतलब ये नहीं है कि ये जरूरी है पढ़ाने के लिए. इट्स जस्ट दैट कि अगर आपको सीखना है तो यस, यू कैन लर्न. एंड अभी तो यूट्यूब है, बहुत चीजें हैं, आप इजिली ऑनलाइन घर बैठे बैठे सीख सकते हैं. जी, एंड थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन मैम. गेट क्लियर करने के लिए. मेरा तो सपना ही रह गया. थैंक यू. आई एम रियली हैप्पी. थैंक यू. थैंक यू. Thank you very much. And before we end this Gup-Shap, so I have just received a WhatsApp from Mr. Harish U- U- U-
Mr. Harish Usgaonkar. So I would like to read out it for Soumya. Soumya says that there is something about telephone that scares her. But in 2016, when I took the responsibility of hosting TISA National Conference in Goa, I was worried that uh, I was worried that there were not enough volunteers in Goa team to help with the registration. Soumya came forward and took charge of the registration. She did it so nicely. She was on phone calls every day. I used to get at least 3 to 4 phone calls every day from her as we were close to the national conference. Now when I have heard about the phone call phobia, I really feel that we should applaud her work. Thank you, Soumya. Thank you so much, Harish. Thank you so much. Wow, you have brought back a very happy memory of Goa National Conference. It is, I mean, it was one of the best conferences. In fact, like I have attended 2 conferences. One was Delhi, which was just a month and a half after I joined TISA. So I was very new to TISA then. But then this Goa NC took place, and yes, and I don't know about phone calls, Harish. I hope I had not troubled you back then, because because I would, yes, I remember I would call Harish for every small thing. What to do, what to do. I would keep on pestering him. So yeah, and yeah, it was, I got a lot of help from him, from Dipesh, and from a lot of other people, from Vishal, from a lot of people, from I am sorry, I'm missing a lot of names, but I know everybody's faces. So yes. So yeah, so it was a team effort and it was great back then. So, and when I keep on saying that I want to come back to, I mean, want to actively contribute to TISA, is because I miss that spirit of a community that TISA has. I don't think it's there anywhere. It's like we are a huge family and we are like there to support each other in every aspect of life. I mean, stammering is just a part of it. I like, for me, TISA, when I think of TISA, it's not stammering anymore. It's more of how it has shaped my life as a whole. Like, it has taught me to accept myself the way I am. So yes, and a lot of people have helped me. Thank you very much, and what a wonderful session it was. I have enjoyed so much today that I can't even tell. Thank you for giving your time, and thank you everyone for joining Gup-Shap with Soumya Saxena, and also until the next Gup-Shap, uh, just remember one thing: कि 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 हकलाओ मगर प्यार से. Yes, हकलाओ मगर प्यार से. Thank you so much, Rohit. Thank you so much for like really helping me out throughout this, and for making this happen. I cannot believe it has been 2 hours. I really cannot believe. Thank you so much. It was fun. It was a great time. Thank you so much, and thank you for bringing in Sachin sir. I am so happy. I cannot even. I ये वो टाइम होता है जब ऐसे शब्द ही साथ छोड़ देते हैं. आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच. Thank you. Bye bye. Bye bye बाय. थैंक everyone. यू. बाय.